Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we are on to lecture 8 today. And today we have to cover a very important topic regarding recurrent neural networks. So I will request all of you to pay extreme attention. We also have hands-on activities today. So first we need to understand what is RNNN, why this is so important, and how does it work, etc., etc. Okay. So let's start. I want to tell you that I have asked the examination department that I don't want to take the second hourly because we still have to cover a lot of material in this course. I don't want to take the hourly just for convolution neural networks. So I will focus on the third hourly. So you are not going to have your exam. You will have your regular class. I've asked the examination department for that today because each topic in this deep learning course is very detailed. There's a lot of stuff to cover thoroughly. So that's why. Okay. So recurrent neural networks are actually a family of neural networks for processing sequential data. So there are several examples of data which is sequential in nature. For example, textual data, time series data, and also videos like the video that you see and you want to process some video. So that's a sequence of images basically. In the case of image data in a sequence, obviously we are not going to use the recurrent neural network directly. Whenever we have the image data, first of all, we are going to use the convolutional part of that to extract the relevant features from the image at each timestamp of the video. And then we are going to feed those features into the recurrent neural network because of the fact that the sequence of images makes sense about something. For example, there's some suspicious activity which happens over several frames of images. So that could be one application when you are doing, security analysis through video feeds. In that case, recurrent neural network could become very useful, but first you have to couple that up with the convolutional neural network. Then also you have the textual, data, which is a very, very, important application of deep learning, in which you want to predict the next sequence or the next word. Primarily, that's the application. Or you want to create a summary of the words that you have seen so far in the data. You can say you want to create a summary of a paragraph or a summary of 2 sentences that you have fed into the neural network or the recurrent network, और उसकी फिर आप उन 2 sentences की output के ऊपर summary generate करवाएंगे. That is going to be sort of a prediction of the input data. So in the case of textual analysis, you have lots and lots of data which is available these days. For example, from Twitter, from different types of news corpuses, etc., etc. And you might want to predict the next sequence for some reason or the other. Okay. इसी तरह bioinformatics में you might want to predict the next sequence of genes that's going to occur. और उसकी वजह ये है कि bioinformatics involves very complicated data structures which are very, very long, but they have a sequence. So you can put the sequence in the recurrent neural network and it should be able to predict the next sequence. In that case, you will not have to deal with, the knowledge of the whole chain. So if the recurrent neural network is able to predict the next
sequence in a bioinformatics data structure, then you don't need to have knowledge of the whole data structure yourself. So the model can do the prediction for you, and based on the prediction, you can do the analysis that you want to do. Okay. So कहने का मकसद ये है कि there are lots of applications of sequential data, and the most prominent one is regarding the time series forecasting. Because definitely you understand now after the ML1 course that time series is a sequential data. So it happens in a particular sequence across time. So that's why one of the most important applications of recurrent neural networks has been the time series forecasting algorithm or its methodology. So there's a lot of work done. There are literally hundreds of papers which have been published on textual processing and also time series forecasting using recurrent neural networks. Okay. So a neural network that is specialized for processing a sequence of values. So you have to keep this in mind. So I start off with some sequence 1. This is not necessarily a time sequence. It could be the number of words. So this could be the first word, for example. This could be the first image data. This could be the first word, or the first sentence if you want to input a sentence at each step of the recurrent neural network. So it's not only time. Okay. When we think of recurrent neural networks, so typically we think of time-based inputs, but it's not only time. At X1, I could have a variety of inputs available to me. And this tau signal represents the end of the chain. So the size of my input is defined by tau. So tau is the size of my input. For example, in the case of word processing, I will say I will input 3 words each time and then make a prediction for the 4th word. Then I will input the next 3 words and make a prediction for the 5th word. And then I will input the next 3 words and make a prediction for the 6th word. So my input sequence in this case, tau will be equal to 3. So my input data or input layer will consist of 3 neurons. Okay. So I hope that this is clear to you. Not very difficult to understand when we see the diagram, inshallah. Can scale. So that is the advantage of recurrence, that it can scale to very, very long sequences. Then would be practical for other networks like multi-layer perceptron or convolution neural network, or even the autoencoder or the GAN, for example, or any other deep learning architecture. This has the power to scale to, to literally thousands of timestamps. It has no issues. And is RNN used in voice to text dictation as well? Yes, it is also used in speech processing, because the speech is also a sequential data. We're going to have one of the projects basically on speech as well. So yeah, that's true. The point is that, if you have some complicated work, then typically you might need to combine 2 deep learning algorithms together. That's the hybrid approach that is becoming very common these days. So for example, LSTM could be integrated inside the autoencoder, or LSTM could be, coupled up with the convolutional network, etc., etc. So I can't say that it is only just one algorithm that's going to be used. So that's the point here, that it is scalable, and it is scalable due to an activity which is called unfolding. So I can basically unfold the whole time series in time, and it is going to, I can unfold it to as many sequences
the length of the sequence as I want. So for example, in the case of the words, here I said that I will input 3 words, but I can also input 100 words. So I can just input 100 words and make a prediction for the 101st word. That's also possible in the recurrent neural network. Okay. The requirement that we have here is, in fact, it's not a requirement, but it's one of the best parts of the recurrent neural network, because जब आप ये कहते हैं कि मैं scale कर सकता हूँ, obviously in the neural network architecture, scalability comes at a cost. The more neurons you add, the more you have to learn, and the more parameters you are going to have. So that's a big blow. We don't want to increase the number of weights. We don't want to increase the biases, and we want to do things quickly. So the recurrent neural network has a very good characteristic that it shares the parameters similarly to the sharing of parameters in the convolutional neural network across the application of filters. So we saw that in the one layer of the convolution, all the parameters are being shared. In the calculation, you can say that you have many parameters, but effectively, if you have like 32 filters in one layer of the convolution, then it's a 5 by 5 filter, then you just have 25 weights to learn. That's what you need to understand. Okay. The same scenario occurs here, although we don't have any filters here, but we have 3 weight matrices. We have 3 weight matrices and we have 2 bias vectors in the case of recurrent neural networks. And obviously these 3 weights and 2 biases are shared across the whole sequence. Okay, so it does not matter how many neurons I add. If it is just one layer of a recurrent neural network, so in the one layer, I could have a long sequence, like maybe 1000 neurons in one layer, or hidden layer, you can say, because the input layer and the output layer are just the default layers in every neural network. The main thing is the hidden layer. So, the convolution layer, the pooling layer, all of these are hidden layers. Okay. So in this case also we have the RNN layer. So we have LSTM layer, multi-cell LSTM or basic LSTM, RNN cell, etc., etc., etc. Okay. So you just need to keep in mind that we are sharing these 3 weights and 2 biases across the different parts of the RNN model. And that means that I'm sharing these parameters across the whole length of sequence that we are actually planning. So isme ye hai ki I will have a sequence which goes forward in time, because obviously there is a concept of time in the recurrent neural network, although I will not be using time always unless I'm doing, let's say, time series forecasting. But there is a concept of time across the sequence. So I'm moving ahead in time. Okay. So I might have like 1000 neurons in this layer, which are the RNN neurons, the hidden layer, right? And they're moving ahead in time here. And I'm just sharing these 3 weights matrices and 2 bias vectors across these 1000 neurons. So that's pretty, that's an extremely good architecture to have, because I am getting scalability, but at the same time, I am getting very efficient as well. So I share the parameters across time. Otherwise, if I have 1000 neurons here in the hidden layer of the RNN, then if the weights are not shared, okay, then I would need to learn different parameters for each neuron or each timestamp, because one neuron is associated with one timestamp, right? Like I told you that by default, we have a concept of time. So one neuron is associated with a time. And if I don't share the weights, then I have to learn 3000 weight matrices and 2000 bias vectors, which is obviously
impossible for me to learn. No matter I give it 2 gigabytes of data, and I cannot control such a situation in which I have to learn 3000 weight matrices or even 300 of them, or 2 bias vectors with the normal PC speed that I have. And typically I'm not willing to wait that long. GPU के ऊपर भी चलो 10 मिनट में करके दे दे. Typically I want to have results very quickly, so it's not going to work. So you need to understand के 1000 neurons में 1000 timestamps, so I can't have a separate parameter for each timestamp, so that's out of the picture. So we just share the parameters. अच्छा, इसमें होता ये है कि due to this sharing of parameters, the recurrent neural network is able to generalize to unseen data. So I'm already, I'm able to generalize to unseen data. That means in the testing data. So obviously that's logical, right? Because we avoid the overfitting due to the reduced number of parameters. The data is more, and the data to learn is less. तो उससे होता ये है कि you learn very well. So when you have less things to learn and you have more data to give to the system, so then obviously overfitting का chance भी कम है, and you're also doing things like dropout and batch normalization and momentum, etc., etc. So there's no way that you're going to overfit that much. So therefore, आपकी testing performance goes very high. And obviously, it also allows you to share the statistical strength. Okay, so this is equivalent to the concept of the convolution in the CNN, that when I convolve, I learn some edges or some regions of the image, and then I pass on that information to the pooling layer. So I'm passing the information. So similarly here, if I have 1000 neurons which are going forward in time, so maybe I learned something at neuron number 11, which is something very good. For example, I learn a very new word, let's say Karachi. And then at word number, let's say 23, I learn something like Pakistan or something like that. So the information is shared across the whole time sequence. How that happens, we'll see right now, inshallah. But you just need to keep in mind that if you are learning different things at different times, then that is shared across the whole time series, or the chain आप कह लें neurons की, जैसे आप उसको कहना चाहें. So that means that everyone benefits from everybody else. So it creates a learning environment, because the point is that I am passing the information from t-1 to t. Similarly, I'm passing the information from t to t+1. So in this way, whatever I learn at t-1, you get to tell that to t. And whatever I learn at t, I get to tell that to t+1. So in this way, t+1 knows about t as well as about t-1. So इस तरह पूरे पीछे सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपकी एक टाइम स्टैम्प पे स्टोर हो जाती है. That does not happen normally in the Markov chain concept. Markov chain says के और the ARIMA models जो कि हम इस्तेमाल करते हैं time series forecasting के लिए, so they, according to them, you are just dependent on the previous 1 or 2 lags, okay, to predict the next time series data. So in this case, the recurrent neural network just ignores that and says that you can see back as much as you want. Okay, so this is the this lays the foundation for the recurrent neural network. Okay, so how are the parameters shared? That's what we need to understand here. Each member of the output is a function of the previous members of the output. Okay, so if I have a neuron here and a neuron here,
So this is at time t, and this is at time t plus 1. Okay. So I can program the recurrent neural network to output at t and also at t plus 1, or output at each neuron. So in this way, this is a whole time series here. Okay. So it's going ahead in time, like in this direction. And I am outputting something here. So I will have an output here. Let's call that y hat at t. So, and also our output here, like say y hat at t plus 1. Now, the point is that the neuron here at this point, this neuron or the hidden neuron of Kale is connected to this neuron. I mean, like physically connected. So, don't think that this is, यहाँ पे recurrent neural network में, this is not one layer. Like normally we have been seeing up to now. We think this is one layer and you will say कि यार ये तो दो layers के दरमियान connection है. So that's not the case. The layers go like this. कि this is the input layer. Then I have the hidden layer here. And then I have the output layer here. And obviously in this area, I can have many hidden layers stacked on top of each other. So it is inverted, like 90 degrees inverted now. So this is the input layer, this is the hidden layer or the recurrent layer, you can say, and then this is the output layer. So this is not feed forward in this direction. Please try to understand this. This is feed forward in this direction. And that's how it has been modeled. Okay. So that's called recurrence. तो इसके अंदर ये है कि I'm going like breadth wise, right? कि in the case of the convolution neural network or the normal multi-layer perceptron, I do not connect the hidden neurons to each other. ये तो आपको पता ही है ना? If I have some neurons in one layer, I never connect the neurons to each other, right? In the normal case. So I just connect them to the next layer and they are connected from the previous layer, but they are never connected with each other in one layer. In the case of recurrent neural network, that's exactly what happens. Okay, the neurons are connected to each other in the same layer. And that is what helps them to model the sequence. Otherwise, you can't model it if you don't connect the neurons. But otherwise, if there is no line here, then you can't model the sequence. So it has to be connected. So that's the point. Okay, the output that comes out here is a function of the input at this timestamp and the input at this timestamp, along with this data which comes from the previous cell. Okay, so that is how the parameters are shared. So I have to do some learning like at these edges. I have to do some learning here, some learning here, and some learning here. Similarly, I have to do here, here, and the one that is going forward here. So these will comprise. Sir, I don't get this. Why? What kind of learning is happening when in the same layer with neurons connected? ये भी आगे आ रहा है, तो you will get the clarity. Right now, just try to understand that the hidden layers, in the hidden layer, the neurons are connected to each other sequentially, and they can scale up to many hundreds of neurons. And in some very large application to even, you can make up to several hundred of neurons. Okay. ये देखें, whenever there is an edge, सही है, then that means there is a weight. ठीक है, wherever there is an edge, that means there is a weight. So here we have three edges. ये अभी next slide में आएगा. अभी just try to understand it clearly. I have an edge which is giving input to a neuron at each timestamp. Okay. I have an edge which is taking the output from the neuron at each timestamp. And I have an edge which is connecting the hidden neurons between two timestamps. So I have three edges basically. And I also have different types of neurons that are there. This is just one neuron that I've shown. This is the hidden neuron, आप इसको कहते हैं. But there are other neurons as well. So that will give us the two bias vectors to learn. Okay, so I'm telling you some things in advance which are coming later on.
So just try to understand right now that we have 3 weight matrices to learn in this type of infrastructure, and we have 2 bias vectors to learn, and we share the weight matrices and the bias vectors across the whole chain. So I will have the weight matrices and bias vector for this neuron around this. I will have to learn the same around this. So the vectors and bias here are the same as the vectors and bias here, and ditto for all the other neurons of this chain. That's what you need to keep in mind right now, that the weight matrices and the bias vectors are shared across all the hidden neurons in the same layer. They are shared. So it's the same weight matrix and there's the same bias vectors. So why they are 3 and why they are 2, we'll see that right now after some time. Okay? So each member of the output, so let's assume that this is the output that we are getting here from this neuron. So it basically, the flow is like this. So the input layer gives the data to the hidden layer. The hidden layer generates the output. That's the thing. Okay, so that's how it goes. The flow will feed forward from bottom to up. So output, let's say if this is the output, each member of the output is produced using the same update rule applied to the previous outputs. Okay, so I have an output here, I have an output here, I have an output here, I have an output here. So all these outputs are being produced using the same update rule and by using the same parameters. Okay, so this recurrent formulation results in the sharing of parameters through a very deep computational graph. So when you have a sequential graph, then that's a computational graph, right? I mean, the neurons are connected in a sequence, so that becomes a computational graph. So you will see the example very soon. Okay. So in this case, x minus t with t from 1 to tau with RNNs operating on mini batches of sequences. Okay. So I start with some data x minus t at x minus t timestamp, then x minus t plus 1, x minus t plus 2, x minus t plus 3, x minus t plus 4, and so on until I finish my sequence. So अगर आप कहते हैं कि my input data is going to contain 4 timestamp values, and then I'm going to make a prediction for the 5th timestamp value, or I'm going to input 4 words and then I'm going to make a prediction for the 5th word. Okay, so you can model the recurrent neural network to follow this architecture. तो ये आपके अपने ऊपर है कि input size क्या रखते हैं. That depends on you. What is your input size? It does not depend on the algorithm. It depends on you. Okay, how you have modeled it. And obviously we always use the mini batches because I have gone through many deep learning papers recently, and almost all of them are using the concept of mini batch in the algorithms that we have been searching. So it is very important to do the stochastic part. So we need to have many batches. We can't just present the whole training data, like this. So we need to divide the gradient update over the mini batches. If there is a cycle in the graph, so just hold on. The picture is coming very soon, inshallah ta'ala. If there is a cycle in the graph, so the cycle in the graph means like I have, let's say, 2 neurons here, and I have some input going to them. So cycle means let's say I'm going from here to here. Obviously, I'm going feed forward, but there is a specific type of recurrent neural network in which I can also come back here. So then that creates a cycle. So it represents the influence of the current variable value on itself in the future. So if there is a cycle, I am able to determine कि यार ये जो variable है ये आगे future में जाके इसका क्या बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये future से input पीछे आ रही है. So जब future से input पीछे आएगी तो what that means कि the previous version of yourself is getting information about what it is doing in the future, because ये जो एक न्यूरॉन का जो मामला है, this is all in just one layer, right? In one layer I'm connecting hundreds of neurons together and they are connected like this. जैसे मैंने आपको बताया है, just keep this in mind. This is the most important fact.
So if they are connected, but अब मैं cycle बीच में ले आता हूँ. If I bring the cycle, then I come back here. So this guy says कि यार 4 timestamps in the future, I'm doing this. So you get to know your influence in the future through this. So it turns out that this bidirectional recurrent neural network has its own advantages, and this is also something which you can try out in the project. Okay, so I hope that up to now the basic concept is clear. So I told you that what we have to do is we have to unfold the computational graph. Unfolding का मतलब basically ये होता है कि we create, replicate or copy and paste the same architecture over different timestamps. So it's like you roll up the carpet. So it looks like just one big roll of something. But when you roll out the carpet, then it becomes a whole carpet. So it's like unfolding a roll of paper or unfolding a roll of carpet. So it becomes a very long chain. So that chain primarily is called the computational graph. And in our case of the recurrent neural network, we are only concerned with one particular architecture, which is most famous, which we will see very, very soon. So the computational graph is a data structure to map inputs and outputs and losses. So that's what even a neural network does, right? That's what even a multi-layer perceptron does. It maps inputs to outputs and losses. Actually, the losses come at the output layer. Okay. So unfold a recurrent. Recurrent means that it is occurring again and again. That's what I told you. Okay. We just copy and paste the same architecture over different timestamps along with parameter sharing. That is why it is called recurrent. You can also call it recursive. So unfold a recurrent computation into a computational graph. So before it is just one layer, very simple network, which means nothing to us basically. But when we unfold it, then I can put the times. Ji? So unfold into a computational graph. So the very basic graph looks like this. Like I told you, let's consider that this is the hidden layer of the recurrent network. So I will put that as the hidden layer. So apologies for that. So yeah, so unfolding, when you unfold, then you generate a structure like this. So I was telling you that consider this as the hidden layer. Okay? Sir, we can't hear you. Hello? सर आपकी आवाज आ रही है सर. हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है. अब आ रही है? जी जी सर आ रही है. सर आवाज आ रही है आपकी. ठीक है. So I was telling you that this is the hidden layer. So above we have the output layer and below we have the input layer. Okay, we are not much concerned. Ji. Sir, you completely disconnected for about a minute there. Yeah. I was starting again. Okay, sir. I'm starting again. उसका परेशानी नहीं है. ठीक है. So when you unfold, then unfolding is done at the level of the hidden layer. And when you unfold at the hidden layer, then you unfold also at the output layer and at also the input layer. So I am providing the input at each timestamp here. So I'm increasing, the time is increasing in this direction. So I'm increasing the time in this direction. And I am sharing, this is an actual edge which is being connected across the different timestamps. So I am providing the input at each timestamp. That's essential. There is no neuron in which I don't provide the input. Acha, output kahan se nikalni hai? That basically depends on me.
like I told you 2 or 3 times, if you want to make a prediction at each timestamp, like you say कि यार मैं तुम्हें I give typically when you do time series forecasting, you don't want to make a prediction at the same timestamp, right? That does not make sense. तो हम कहते हैं कि यार I am giving you the information at time t, then make a prediction at time t plus 1. At the basic level, that's what we say. So in that case, when you model the recurrent neural network, you are not going to put the output here. Okay, you are going to put the output neuron here. सही है? Or this depends on you. Okay, typically, if you have a very large time series, then you might say, okay, yeah, let me present to you 5 timestamps, and then you make a prediction for the 6th timestamp. For example, electricity load forecasting के अंदर, you might say, okay, I am going to give you the data for 6 days. Now make a prediction for Sunday. So I will have 6 neurons here, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, one more. And then at the 7th neuron, जो भी चीज आएगी अपने सॉरी इसके जो चीज आएगी यहाँ पे जो चीज आएगी, या फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो चीज आएगी उसको आप कह लें 7th न्यूरॉन की जो आउटपुट होगी, that is going to be the prediction that you want. So there will be no output neurons in that case for all the previous 6 neurons, but there's going to be an output neuron for the 7th at the 7th neuron. ठीक है? So that depends on how you model the problem. At the level of the recurrent neural network, it is not a problem. You can have the output neuron at each timestamp if you want. But for some problems, that does not work unless you want to generate the same data. Do you understand? Yani you are using the recurrent neural network, you are providing the words or the time series, and you want the system to predict the same word that you are inputting at that particular time. वही सीख लो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ. That is also possible. You can do that if you want. ठीक है? But for some problems, that might not be very logical thing to do. So there is a flexibility. So unfolding means exactly that आपने कितनी input देनी है? भाई मुझे 4 inputs देनी है. ठीक है, 4 तक unfold कर लो. That is the basic idea that we have. And the parameters that we have here are exactly the parameters that we are sharing. You know, that theta involves basically the 3 weight matrices and the 2 bias vectors. So here theta, here again theta, here again theta, like I told you in the previous slide. The theta is being shared across each neuron. It's the same set of parameters. And also this basically S is, in our case, it is the hidden layer. So you can replace that by H, and we have done that later on. But it's just to tell you, okay, what happens today is a function of what happened yesterday. So now imagine, okay, let's say okay, this is today. So what happens today is a function of what happens yesterday. What happens, so let's start from here. Okay, what happens 5 days ago, okay, has some influence on what happened 4 days ago. Okay? And what happened 4 days ago has some influence on what happened 3 days ago. This influence what happened 2 days ago, and this what happened jo hai 1 day ago, and now 1 neuron here what happens today. So ho ye raha hai ki what happens today, that includes the information from all the previous timestamps, which is not possible in ARIMA models at least, or in Markovian models, or even in Bayesian analysis. You can't, you can't have long sequence of probabilistic neurons, even in any Bayesian analysis. Bayesian analysis does not, was not really invented for scalable probabilistic neurons. Lekin, fortunately, as compared to frequentist approach, जो कि चीजों की frequency count करके उस पे अपनी analysis करते हैं, the Bayesian approach is very much applicable in machine learning and deep learning. Bayesian analysis का सिर्फ मसला ये है कि it is very slow to learn. That is the only problem it has.
लेकिन बहरहाल what I'm trying to tell you is के the probabilistic inference mechanisms of Bayesian analysis are not that much scalable, ठीक है, as compared to this infrastructure which is highly scalable. So you can scale up to as many neurons as you want, ठीक है. So theta is shared across the whole chain. And it is recurrent because the definition of state S at time t depends on this definition at time t minus 1. So if I have time t here, so that incorporates information about t minus 1, t minus 2, t minus 3, t minus 4, all the way up to the beginning. Okay. So this is a repetitive structure. I am sharing the same parameters and I'm basically creating the same sort of neurons. The only difference is that I am providing different input here. और जब आप input different provide करेंगे, so obviously that is going to affect these weight matrices and the bias vectors differently at each neuron. That is why we need to learn them at each neuron separately. Update them, sorry, at each neuron separately. Unfolding this graph results in the sharing of parameters across the computational graph. So ये चीज आप अपने ज़हन में रखें कि due to this unfolding scenario, I am able to share the parameters. If I do not share the parameters, I will have to learn 3 weight matrices and 2 bias vectors at each neuron separately. Why they are 3 and why they are 2, ये मैं आपको equation से भी बता दूंगा, ठीक है? But that is computationally intractable for us to learn these at each neuron separately. That is not computationally practical. So that is why we share them, and the sharing becomes possible due to the unfolding scenario and due to this particular connection that we're making between the hidden neurons. So this is just a clarity of what you saw in the previous slide. So S3 equals to function of S2 theta, which is a function of S1 theta. So you can see S3 is represented as a function of S1 and the parameter always remains the same. So that's the most important part of recurrent neural networks. If we apply this repeatedly, the recurrence vanishes. Now represent through directed acyclic graph. So basically what they're saying is that we don't need to use this notation all the time. So we can just model this like that. और जब आप coding पे जाएंगे तो you will not be even dreaming of these things, because coding में is a completely different story in which you have to deal with the LSTM cell and how to make the prediction, how to do that. So वो एक अलग कहानी है. So it's a directed acyclic graph. सही है. It's not a cyclic graph, it's an acyclic graph. If it is a cyclic graph, then it will be the bidirectional case. सही है. So we'll see. Sir, what does it mean by if we apply this repeatedly, the recurrence vanishes? Does it mean the sequence vanishes? No, the sequence does not vanish. The point is that recurrence vanishes का मतलब ये है कि you don't need to this formalism जो हमने लिखा है ना, you don't need to think about the fact कि S depends on t plus 1, t minus 1, t minus 2. That's the thing. Basically, what you see at this edge is just that S here is dependent on st plus 1. That is it. So it's like the Markovian case. The Markov assumption के जैसे चल रहे हैं. On the contrary, हो ये रहा है कि it is basically this incorporating the whole chain. ये उन्होंने लिखा है उसमें words के हिसाब से लिखा हुआ है कि you don't need to do this mathematically throughout this network at each timestamp. यानी जो feed forward का और जो back propagation का जो mechanism है उसमें we don't need to be going that much deep कि हम हर level पे आके ये देख रहे हैं कि S depends on t plus 1, t minus 1, t minus 2, here t plus 1 depends on t. तो हमें मैथमेटिकली उसको लिखने की जरूरत नहीं, वो खुद ही उसको कैटर कर लेगा. Okay, sir. सही है. So that was the logical thing जो इससे आप डिराइव कर सकते हैं. I mean, देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, डीप लर्निंग जो है ना वो एक it's a very complicated game. यानी कहना तो बहुत आसान है डीप लर्निंग को, लेकिन उसको समझना, उसके मैथ्स को और फिर उसको आगे
उसमें रिसर्च करना, उसमें प्रोजेक्ट करना, दैट्स नॉट इजी. It takes a lot of time to control a deep learning algorithm और to ensure कि आपकी predictions अच्छी आ रही हैं या सब कुछ सही चल रहा है. देखिए एमनिस्ट वगैरह पे काम करना एक अलग बात होती है. If you talk about real world data set, the story changes altogether. ठीक है. So that's the thing कि सर वैसे एमनेस भी तो रियल वर्ल्ड ही था, मतलब वो कौन सा सर आपने कहीं और से मतलब अलग जगह से निकाला था? हाँ देखें, असल में जो the point is कि the people who are writing this are using the data sets which are very childish, like MNIST, Fashion MNIST, सिफार, मतलब इस पे अब हजारों लोगों ने काम कर लिया है. अगर आपके अपना कोई डेटा सेट हो, लाइक एग्रीकल्चर का हो या कोई ट्रैफिक का हो या लैंडस्केप का डेटा सेट हो, तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इवन इन यूजिंग अ बेसिक CNN before you get the accurate prediction and object detection and all those things. That in that perspective it is not easy. I mean, you need teamwork to do that. That's what I'm saying. अच्छा, इसमें रिकरेंस वैनिशेस का मतलब ये भी हो सकता है कि आई मीन अगर हम इसको रिपीटेड अप्लाई करते जाएं तो यहाँ पे 3 लिखा होगा और यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे -50 पे. सो वहां पे फिर रिकरेंस इतनी जाहिर नहीं होगी, लेकिन रिकरेंस होती है. ठीक है. तो एक और चीज थी कि अगर हम 5, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी. अगर हम 5th टाइम स्टैम्प के लिए यानी कंसिडर करें, यानी खाली 5 टाइम स्टैम्प के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इसको एक अनफोल्डेड फॉर्म में ही रख सकते हैं. तो वो इसके अंदर फिर रिकरेंस काउंट नहीं हो रही होगी. एज इन के रिकरेंस के अंदर तो होता है ना कि हमारे पास कंटिन्यूसली एक साइकिल चल रही है, लेकिन 5 टाइम स्टैम्प के लिए हमने लॉक कर दिया, अब ये चेंज नहीं होगा. क्या हम इसको इस तरह भी ट्रीट कर सकते हैं? जी 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 जी. देखें, उसमें जो द पॉइंट इज कि इफ यू टेक 5, तो the weight updates have to happen. सही है. If I don't have the output neuron here, for example, then one of the weight matrices will be missing. ठीक है, वहां पे अपडेट ही नहीं होगा. It's only going to be updated here, for example, जहां पे आपने output neuron रखा है. So all of these connections are missing, so the weight update here is not going to happen for that particular weight matrix. But the other 2 weight matrices are there, so they will be updated. तो इस तरह कर सकते हैं. सही है. ठीक है. अभी हैंड्स ऑन देखेंगे ना तो आपको जरा ज्यादा वो समझ में आ जाएगा. ओके सर. अच्छा, दिस इज द बेसिक अनफोल्डेड थिंग. एंड व्हेन अच्छा, इस ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है कि a difference of 1 time stamp. So t minus 1, t plus 1, that's what the black box means. So when I unfold it, so it gets unfolded like this. So this is the whole chain which gets unfolded. Otherwise, I'm just presenting one vector of information. I have probably this is just one neuron and I have just the output neuron here. So I can just have the output neuron here as well. So this is just one, just a single multi-layer perceptron scenario. Okay. बल्कि परसेप्ट्रॉन सिनेरियो कह लें कि I just have, this can be the whole vector of x. So some inputs here, then इसको हमने इस तरह मॉडल किया हुआ है. So there is no unfolding here. But when we unfold, so I will have the opportunity to present each input at different timestamp according to the sequence that we have. In this scenario, we don't want a sequence. We can't input the sequence in one vector together. We need to have separate, क्योंकि मकसद यही है ना कि जो आपके textual, for example, if you have the textual data, so each क्या कहते हैं, each word is important, right? If you want to, if you want the system to predict the next word, then you have to give it 3 words, and it has to learn each word separately. I can't give it like 3 words combined together and then say this is just one input. That does not make sense. So every word is a separate input, so that's why we need a separate neuron. So I will now map this equation. So let's say now we have an external. Up to now we did not have any external signal here. तो मैंने आपको खुद बता दिया था कि इस तरह की कहानी है. So this is just one directed acyclic graph just to tell you the concept, but that is not what happens in real life. So in real life, I do have an external signal because I want the system to learn something.
So now the external system is given by the input X, which is what we have. The data that we have is the input X. And at each timestamp, so one layer occurs at one particular timestamp. So this is one whole layer. So I just told you output, hidden, and input. So the same timestamp occurs at the 3 level, HT, XT, and so on and so forth. So I do start from some internal state to basically you can say, okay, I seed this state. Okay, so I will initialize this starting from some internal hidden state, which is going to feed here. And this hidden state does not have any input or any output. It's just a starter. Okay. Acha, recurrent neural network ke andar the especially for the time series problem, the activation function that is most common is tanh. Because we are able to make a prediction between -1 and 1. So that it seems from experience ke this is the most probable range that we need to have at the output of the activation function. Okay, so especially for time series forecasting tasks, so most cases में we are using the tanh. ReLU का याद रखिएगा कि ReLU जो function है ना वो that was more beneficial in the case of convolutional layers basically. सही है, convolutional के जो neurons थे उसमें जो activations calculate करते उसमें ReLU was more it was better. In the fully connected network, you are supposed to use either the sigmoid or its family like hyperbolic tanh. You can use ReLU as well. I'm just telling you how these things have been used previously. इनका अच्छा इस्तेमाल कहाँ पर होता है. So it turns out that you should try out the hyperbolic tangent function in the case of recurrent neural networks. So और ये भी है कि the neuron, the output neuron, so this is at the end. So इन्होंने यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, but you can imagine the output neuron. So this is H. So yeah, this is H. But let's say that this is the termination of the layer. So this is my output neuron, and the output is coming here, which is Y hat, for example. And I compare that with Y to find out the loss function and then back propagate whatever. ठीक है? वो तो एक चीज होगी, अभी आपको नजर आ जाएगा उसमें. So एक और चीज ये है कि at the output neuron I'm using the linear activation. सही है? Output neuron के ऊपर I use the linear activation function, and at the level of the hidden layer I typically use the hyperbolic tanh function. आप sigmoid भी use कर सकते हैं, वो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? अच्छा ठीक है, तो ये चीज आई थिंक जस्ट गेट द कॉन्सेप्ट इन माइंड कि ये इस तरह चीजें चल रही हैं. आई एम शेयरिंग द वेट्स. आई कुड हैव माय ऑप्शन ऑफ द आउटपुट के आउटपुट किस न्यूरॉन पे जनरेट करनी है, मेरे पास उसका ऑप्शन है, बट आई हैव इनपुट एट ईच टाइम स्टैम्प. दैट्स द एक्सटर्नल सिग्नल दैट आई एम गिविंग टू द रिकरेंट लेयर नाउ, एंड इट इज पॉसिबल टू हैव मल्टीपल रिकरेंट लेयर्स. ठीक है, सो आई कैन हैव द इनपुट लेयर, सो आई विल जस्ट पुट दैट एज I can have a layer of recurrence, so I will put that as R1. I will stack another layer on top of this. I will have R2, and then I can have the output. So similarly to what happens in multi-layer perceptron and convolutional neural networks as well. So you can have multiples. We call them stacking. In this case, it's a stack because we are going from bottom to top. So it's from stack keh rahe hain. So it's actually stacking of layers together. So in the case of the LSTM algorithm, obviously I can have two LSTM layers, one here and the other layer here, and I can even have multiple. Okay. So when the recurrent neural network is required to predict the future, okay, so it uses the HT or the information at the hidden neuron at time t as a lossy summary of the relevant part of the past sequence of inputs up to t. Okay? Okay, let's say I'm talking about this point, right? So why we are saying what I told you the input signal coming in at HT incorporates the time information or the information of the hidden state across all the previous timestamps.
ठीक है. So HT knows about T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, all the way up to this neuron which starts the whole process. HT knows everything. But what we are saying is that it's a lossy summary. It's a lossy summary because of the fact that I provided many inputs, X1, X2, X3, XT, all the way up to XT. Okay? I provide many inputs, and that input has been sort of encoded इस इन inputs को करने की वजह से neural network ने जो चीज सीखी है, what the recurrent neural network has learned from these inputs across all the previous timestamps is incorporated here in one neuron HT. So obviously it's sort of an encoding, right? ये तो एक छोटी सी encoding सी हो रही है कि आप इसको इस तरह कह लें कि this is encoding the information or hashing the information which is present at all the previous times as hidden states. And hidden state information is what is used for making the prediction. So hidden state is your main is your crux of the network, because अगर hidden neurons ना हो तो input output layer को हमने क्या करना है? They mean nothing to us. So the hidden neurons carry the information through their activations for all the previous timestamps. But what we are saying is कि it's a kind of a lossy summary. तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी तक जितना मैंने तुम्हें बताया तुम्हें पूरा यहाँ पता होना चाहिए. That's not going to happen. Even if it remembers 70% of what you have told it at the input here, सही है. So that's a big deal. सही है. So that's what we are saying कि we have an arbitrary length vector which is mapped to a fixed length vector HT. So HT, if you consider HT to be a vector, सही है, तो this X1 is arbitrary because the user defines the input sequence. ये आप define करेंगे कि I'm going to input 5 timestamps and then make a prediction for the 5th one. I'm going to input 6 words and make a prediction for the 7th one. ये तो आप define करेंगे ना, तो it's arbitrary. But whatever the size of the input sequence you have, it gets mapped to just one particular vector here, which is HT. That is why we are saying कि although that's a very good thing कि हम ये recurrent connections के through we are transferring the information across time, but the point is कि you are also losing some information because of this encoding. But it turns out कि that loss is not actually very dangerous for us. सही है. So just अब ये आपको मैं बताने लगा हूँ बस just this last thing. We can represent the unfolded recurrence after t steps with a function gt. So ये एक, I mean just for explaining purposes के at time t I have information which I inputted at time x1, or all of these are inputs all the way up to time t, and all of these inputs which are incoming, so I just put them in this function gt which I apply again at time t, because in this case you have to remember the timestamp, and then obviously that is going to give me the hidden state. So hidden state will be computed basically. So this ये actually activation function होता है. So इसको हम अभी देखते हैं कि ये किस तरह का. It's a very simple 3-4 equations हैं जो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह. So this is the activation function which जब देखें जब भी न्यूरॉन होगा you're going to have an activation function about it. ठीक है. So you model it like this कि ht equals to f of ht minus 1 given xt and theta. So I give you the information at time t, but I have information about ht minus 1 as well, which incorporates information about all the previous timestamps that you have given. सही है. तो ये वो हिस्ट्री है जो आपको गिवन है, ये करंट टाइम स्टैम्प है, ये वो पैरामीटर्स शेयर हो रहे हैं. So single model that operates on all the time steps, and all the sequence lengths, rather than needing to learn a separate model GT for all possible time steps. That is not going to happen. मैंने आपको बता दिया था कि we can't learn a different weight and bias matrix for each other. We have to learn the same one. So generalization हो सकता है, the parameters बहुत कम हो जाते हैं. सही है. So I think this concept is now pretty clear. Okay, so this is the architecture that is most commonly used in the recurrent scenario. Okay, so output at each t, sorry, not most commonly used, most commonly used in academic circles. For the application purposes, I'm not sure this is the most commonly used, unless you want the system to learn
the same thing at the same timestamp. जो वर्ड मैंने यहाँ इंसर्ट किया वही वर्ड यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, जो वर्ड मैंने यहाँ इंसर्ट किया वही वर्ड यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए. तो यू आर बेसिकली टीचिंग इट एट द सेम टाइमस्टैम्प. सही है. So that's not prediction, that's just generation of data that you are training the system to do. That's just generation of the text. So give some input here and generate some text here. So if you want to predict, then you have to obviously model it differently. Barhal, output at least empty and recurrent connections between the hidden units. So this is the basic stuff. So I'm putting this recurrent between the different units, blah, blah, blah. Acha, now some facts about what is happening here. Just let me... Right. Acha, so now listen carefully. I start off here with this hidden neuron. This is my initialization. I have already unfolded the chain like this. I have decided to take 3 input. I've decided to give 3 elements as my input sequence. So obviously now I have 3 layers. You can say not 3 layers. You can say कि 3 partitions कह लें इसको या जो भी कह लें, ठीक है. 3 partitions of the whole network. How many layers do I have? I have the input layer, then I have the hidden layer, then I have the output layer, and then I have the loss layer, which is not actually a loss layer. ठीक है. It's just computation of the loss. So basically I have 3 layers: the output layer, the hidden layer, and this becomes the input layer. ठीक है. So ये तो आपको पता ही है ना कि at the output layer I compute the loss and when I compute the loss I compare that with the actual value and then back propagate. सही है. So ये वो उन्होंने represent किया हुआ है. ठीक है. So इसमें एक चीज ये है कि if you're talking about the word sequence prediction, so we basically use the softmax function to output the probabilistic outputs. जैसा कि आपने उसमें देखा था ना logistic regression के अंदर. In the case of logistic regression, we are being given like 2 classes, C1 and C2, and the output it tells okay, what is the probability of each class occurring. So I have P1 and P2, where P1 plus P2 adds up to 1. So this generation of probability is actually done by the softmax function. ठीक है. The softmax function generates the probabilities from the output. So output को आप ये समझें कि they are non-normalized probabilities. सही है, but they are log probabilities. आप उसको कह रहे हैं, they are log probabilities. But the when I generate y hat is what comes out from here after the application of the softmax function. So whatever comes out here, I apply the softmax. ध्यान से सुनिएगा. सही है. जो भी आउटपुट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का जो भी आउटपुट आता है मैं उसको softmax function में डालता हूँ. I get y hat, where y hat actually gives me the probabilities of each class that you want to predict. So in the case of the word prediction problem, so let's say that your input data contains 1000 words. सही है. आपका input data stop words और lemmatization, tokenization सब प्री प्रोसेसिंग करने के बाद आपका जो डेटा है that contains 1000 words, pure 1000 words, जिसकी बेस के ऊपर आपने नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करना है. ठीक है. So those 1000 words, I don't know कि इसमें stop words आप रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, because I think it was sequence के हिसाब से देखना पड़ेगा. So it will predict more important words, not the stop words. ठीक है. So let's assume we have done that. So in that case, if I have 1000 words, when I apply the softmax function, it is going to generate the vector of 1000 words, and each word is going to have a probability, and the total probabilities are going to sum up to 1. और उसके अंदर जिस वर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वही वर्ड हम यहाँ प्रेडिक्शन पे समझेंगे. सही है. सो softmax फंक्शन का काम सिर्फ यही है कि इट जनरेट्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच क्लास, चाहे वो इमेज की टाइप हो चाहे वो वर्ड हो. सही है. सो इट कैन जनरेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास. You just have to give the output of the recurrent neural network to the softmax function. It's going to generate y hat,
through y hat and y, you're going to compute the loss function, and then you're going to back propagate. सही है. So that's what happens. The loss is defined by this. अच्छा, इसकी जो एग्जाम्पल है like this one, ये वो एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि like prediction of words है. तो I took this obviously from a blog. So had a general, in this case they have not removed any stop words. ठीक है. So I want to, I have said कि चार, I'm going to input 3 words and then you make a prediction for the fourth word at the 3rd level. So when I put the softmax here, so softmax here is going to generate, you know, I don't know, I might have like 112 element vector in this case. So my input consists of just 112 elements. That's what I'm going to do. So it is going to generate a probability for each of the word. And you can see that this word number 37 or the element number 37, which corresponds to the word council, has the highest probability. So that means that had a general, the next prediction is going to be council. So what comes out of the output layer can be the unnormalized. Unnormalized इसलिए कह रहे हैं क्योंकि softmax function also normalizes. तो softmax लगाने के बाद normalization होगी. Softmax से पहले the value that comes out is like, you know, like you go and buy vegetables, raw vegetables. So they are like unnormalized. ठीक है. और जब आप उनको काट के पका लेते हैं तो become normalized through a softmax function. इस तरह की मिसाल ले लें. तो जो fresh चीज आ रही होती है पीछे मार्केट से, that's unnormalized. Similarly for the data which comes out immediately from the output layer, that is unnormalized. Log probabilities अब इसलिए कहते हैं क्योंकि we are actually talking about the log likelihood. हम जो भी वैल्यू आती है हम उसको log ले लेते हैं. log हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको बेसिकली डिफरेंशिएट करना और उसके साथ काम करना आसान हो जाता है. It brings all the values in a particular range. And if you think about the likelihood function, तो likelihood function क्या है? Likelihood function ये चीज है कि what are the parameters of this model that makes this output most likely? That's what you have to find out. That's the likelihood function. So it turns out that we do not find out the likelihood, rather we find out the log likelihood, which is based on the concept of this probabilistic vector जो कि output पे आया है. So probabilities के through आपका log likelihood जो है वो calculate किया जाता है. ठीक है. ये machine learning में और अभी भी मैं बता रहा हूँ और ML1 में भी बहुत सरसरा सा इसको बताया था. But you just keep in mind कि whenever we have a machine learning or a deep learning problem, so I do have a likelihood function, and what I want to do is what does that mean? That means what are the values of these parameters which are going to make this output most probable. तो most probable जो है ना वो आपको probability vector से ही मिलेगा. सही है. So that's why we can apply the concept of log likelihood here as well, although the loss function that we are going to use can be just the quadratic loss function. उसको quadratic loss function कर लें बस वो काफी है उसके लिए. ठीक है. सही है. ये क्लियर हुई है बात? So sir, after the softmax function is applied, the value is compared, the value is put into the loss function, and that is used to update the weights and biases. जी देखें, softmax function का जो output है ना actually, that is called y hat. So that is the predicted value, and that predicted value is compared with it. For example, in this case, let's say my yt was 37. सही है. But the most probable value was 36. So now I'll find the difference between these two. That will be the loss. So yeah, and then I will use the loss to back propagate and find out update the weights and the biases. That's the thing. So just keep in mind that this architecture, this architecture is the one that you will see, I think, the most in most of the blogs. And also in the deep learning book that I followed for this particular lecture, यहाँ पे मैं आपको main चीज तो बताना भूल ही गया. The 3 weight matrices that I was talking to you about are U, V, and W.
So U is the weight matrix between the input layer and the hidden layer. V is the weight matrix between the hidden layer and the output layer. And W is the weight matrix between the hidden layer and the next hidden layer. And these three weight matrices are being shared across each timestamp. That's exactly the same. They are exactly the same. होता ये है कि जब आप back propagate करते हैं, so in this case the algorithm that we use is called BPTT, back propagation through time. Because of the fact कि हम recurrence पे आए हैं, तो that's why we have to क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसको differently नाम दे दिया है. Basic concept is exactly the same. It's pretty straightforward. It's exactly the same. Okay. So what happens is that when I find out the loss here, I start back propagating. First of all, I update the weights, these three weight matrices in this particular layer. Layer कहेंगे उसको क्या मैंने कहा था? In this particular combination. ठीक है. सबसे पहले मैं weight matrix UVW I'm going to update in this particular section, and the bias vectors are also there. One of the bias is here and one of the bias is here. So there are two bias vectors and there are three weight matrices. I update them here. Based on this information, I use this information to update the weights here. So I update the same matrix again at this particular second combination based on the information that I've learned here. And ditto for the previous timestamps. So that's what happens. Okay? So I am updating the same weight and the same bias at each timestamp using the BPTT algorithm. That's what you need to keep in mind. ठीक है? अब इसकी इक्वेशन हम देख लेते हैं आप. सर यहाँ पर एक सवाल है छोटा सा. सर अगर हम एक टाइम स्टैम्प को कंसिडर करें सिर्फ, तो ये U और V जो है, अगर हम जैसे हमारा जो नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर बात करें तो U और V सेम होता है, यानी एक ही चेन होती है. इस केस के अंदर डिफरेंट है अगर हम खाली एक ही स्लाइस को देखें. नहीं. नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क के अंदर सेम नहीं होता. ये जैसे इनपुट लेयर हो गई, ये आपकी हिडन हो गई, ये आउटपुट हो गई. राइट. सो आई हैव एजेस फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड आई हैव एजेस फ्रॉम हेयर टू हेयर. और उस केस में ईच एज हैज अ वेट. सो इफ यू, अगर आप ये कहते हैं कि एक वेट मैट्रिक्स ये पूरा हो गया, ये this is like W1 and this is the other weight matrix W2. So I have the weight matrix between input and hidden is different from the weight matrix between hidden and output. ठीक है. In this case the only difference is के यहाँ पर अगर मैं एक hidden layer लेता हूँ तो I have two weight matrices to learn. On the contrary, इधर अगर एक ही hidden layer ले रहा हूँ, which is this one basically, so this just taking one hidden layer, I still have to learn three matrices. ठीक है. ये थोड़ा सा एक यहाँ पे बस थोड़ा सा काम जरा ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंशियल डेटा नहीं है. तो सीक्वेंशियल की वजह से यहाँ पे जो है वो तीन मैट्रिसेस मुझे लर्न करने पड़ते हैं. ठीक है. Sir, W is the weight matrix that is shared between neurons of the same weight length. Yeah, exactly. बिल्कुल यही है. And okay. Sir, what were the two bias matrices? Yeah, one of the bias, देखें, the activation function is being applied at the hidden neuron and at the output neuron. Here I apply the activation function to generate Y hat. Here I apply the activation function to generate the input for the output neuron. So wherever I have the activation function, I will have the bias there. और तो कहीं activation function apply हो भी नहीं सकता ना. I can't have the activation here. It is just a linear pass to this one. I'm just passing the data here. Okay. So that is why I have one bias value here and I have one bias value here. So at each timestamp, I have to update three weight matrices and the two bias vectors. Okay, just this is the second model that we use. Second model के अंदर हम करते ये हैं कि we are not connecting in this way.
Rather, we are connecting the output of the previous timestamp to the hidden layer of the next timestamp. So these connections are not there. So I'm not actually passing the information directly from hidden state to hidden state. Rather, I am just passing the information of the previous output to this one. Now, this really, creates problems because if I'm not, मैं अगर उसको ये नहीं बता रहा कि पिछले टाइम स्टेप में तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन थी, सही है कि इंटरनली तुमने क्या सीखा था, that information is gone. Rather, I apply the activation, I use this weight matrix to generate the output, and I am giving it the output. सही है, तो मैं इसको आउटपुट बता रहा हूँ कि पिछली आउटपुट ये थी, मैं ये नहीं बता रहा कि पिछले पूरी सीक्वेंस में क्या हो रहा था, which is present in HT-1. So I am not giving HT-1 to HT, I am only giving OT-1 to HT. So this is pretty limited. Cannot pass all the information about the past into the future. Can only pass a specific output of the information to the next hidden state. That is very limitation. So output cannot store all the input history. It's compared with Y only. तो अच्छा मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप यहाँ पर इसको सारी इंफॉर्मेशन दे दें, यानी यहाँ से इंफॉर्मेशन इसको भेज दें या X का पूरा वेक्टर कलेक्ट करके यहाँ से इंफॉर्मेशन दे दें. That is not logically the right thing to do in this case. So first of all, we don't want to create any cycles. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि if we collect the X values and put them all independent and combine them and give them all together to HT, so it might not be able to learn कि ये क्या हो रहा है, because that's not what you have been doing previously. तो previously तो आप अलग अलग अल्फाज करके दे रहे हैं, अलग अलग टाइम स्टैम्प्स दे रहे हैं, यहाँ पर आप combine करके दे देंगे. So there is no way that we can give it some extra information other than OT-1. And it is not allowed to go there because that's what we want. Why do we want this? Because this is easier to train as all the timestamps are decoupled. अब हो ये रहा है कि because of the absence of these recurrence connections, ध्यान रखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, recurrence connections अब गई, सही है. So now every combination here, every timestamp becomes independent of the next timestamp. So I can learn independently in parallel. यहाँ पर मसला ये है, when we are talking about this case, I learn something here. Let's say मैं feed forward कर रहा हूँ, मैंने यहाँ को सीखा, मैंने पहला इनपुट दिया, मैंने यहाँ को सीखा, मैंने दूसरा इनपुट दिया, मैंने यहाँ को सीखा, तीसरा इनपुट दिया, मैंने यहाँ को सीखा. अब मैं I can't do anything about it until I back propagate. I have to store that information with me until I back propagate. अच्छा, अगर आप कहें कि जी parallelization कर लो, use some parallel processing algorithms के ये timestamp अलग process हो जाए, ये अलग हो जाए, ये अलग, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि this will be updated only based on this. जो the hidden state at time t, this can all इसके जो weight vectors हैं वो सिर्फ उस वक्त अपडेट होंगे जब आगे वाला अपडेट पीछे मिलेगा आपको, सही है. तो therefore I have to learn sequentially. The back propagation has to proceed sequentially in this normal case, and that is why it is going to take a lot of time. Back propagation through time with this particular architecture in which you are connecting the recurrent neurons, which is the default case primarily. Usme it might take some time if your problem is complicated because of the fact that I cannot delete the data until I wait for the feedback to come back from the previous layer. मैं अपनी स्टेट की इंफॉर्मेशन मुझे सेव करके रखनी पड़ेगी क्योंकि ये जो स्टेट की इंफॉर्मेशन है ये मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी जब मेरे वेट वेक्टर्स अपडेट होंगे. अगर मैंने ये स्टेट इंफॉर्मेशन लूज कर दी देन आई एम अ गॉनर, ठीक है, फिर तो पूरी टाइम स्टैम्प मुझे निकालना पड़ेगा. सो व्हाटएवर द स्टेट इंफॉर्मेशन here it will be saved until I come back propagate, update weight matrices, back propagate, update weight matrices, back propagate, update weight matrices, and then I can lose that information. इसीलिए आपके जो इसके hands on के अंदर you have to tell the LSTM algorithm that you have to keep it stateful.
कि फॉर वन मिनी बैच जो कि मैं दे रहा हूँ, एक मिनी बैच के लिए जो मैंने आपको दिया है, यू हैव टू रिमेंबर द स्टेट। ये आपको एल्गोरिथम को बताना पड़ता है LSTM के अंदर कि आपने उसकी स्टेट को याद रखना है, अदरवाइज तो बैक प्रोपगेशन चलेगी नहीं। सही है। तो ईच मिनी बैच बिकम्स वन पर्टिकुलर एपॉक, यानी एक मिनी बैच जब गुजरा तो वो एक एपॉक हम कहते हैं वो चली जाती है अगर स्मॉल डेटा सेट है, और हर मिनी बैच के बाद वी कैन रीसेट द स्टेट्स। सो रीसेट स्टेट्स का फंक्शन है वो आप रीसेट स्टेट करें, लेकिन you have to remember the state until the back propagation happens, which is only going to happen at the end of the mini batch. The mini batch के आखिर में back propagation होगी ना, उस वक्त तक आपको state की information याद रखनी पड़ेगी. That is the problem here, and that is why it takes a lot of time. In this case, I don't have that particular strict condition here. यहाँ पे मैं सिर्फ उसको एक signal pass कर रहा हूँ, which is not a representation of the whole time series. So it's just an extra signal here जो कि मैं independently भी compute कर सकता हूँ. So it can go along in, you know, parallel में भी, this and this can go along in parallel with each other. समझ में आ रही बात की? So there's no need for me to keep everything, उसको संभाल के रखो जब तक कि पीछे से आगे से बैक प्रोपगेशन नहीं आ जाती. नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे मेरी टाइम की रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे मेरी कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो this can become one thread, this can become another thread, this will another thread, and this will proceed much faster. It's very easier to train. ठीक है, लेकिन इसमें accuracy आपकी लाजमी बात है कि effect होगी क्योंकि it's not remembering the whole time stamp. ठीक है. And now this is the third model जो कि मैं आपसे discuss कर रहा था कि recurrence between HT and HT+1 and produce output after the sequence. So this is what we're doing. So we are providing the information XT-1 with the information XT, XT+1, XT+2, and I just have to input the 4 words, okay, and then I'm generating the output at the 4th neuron. So OT or OTO only happens at the 4th neuron. And from this I compute the loss function, and then I, based on YTO, I compute the loss function. Here I have Y hat, obviously. So I have Y hat and Y hat of tau. So I subtract it from this and then back propagate. So this just summarizes the sequence. So this is also one of the models that you can use. So अभी जो चीजें चल रही हैं उसके अंदर जो है typical LSTM जो traditional जो recurrent neural network है उसमें आपके फिलहाल ये 3 आर्किटेक्चर्स हैं जो कि ज्यादा लोग जिस पे काम कर रहे हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं. So this I've already showed you. Okay, so let me just देखिए, one of the ways in which you can use this network is to make a prediction based on time, right? So there could be a situation, there could be a situation जहां पर आपको input पे you will present a few things over different timestamps, and then you will want the prediction to happen. For example, agar let's say कि I do like this कि the work here is not that great and I am planning to shift to another room. Let's say it's like that. ठीक है. Now I want to, let's say कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि I want to predict the next word. So उसके different models हैं, right? I will say कि I will just input one word and then predict the next word. I will input the network should predict work. I will input work, the network should predict here. I will input here, the network should predict is. And this is happening over time. सही है, तो the sequence is there. But that is not the right way, because the point is that you cannot expect the recurrent neural network to learn at this level, right? अगर मैं आपसे कहूँ कि how can you predict कि I want the next word to be work? Even अगर मैं आपको कुछ sample words भी दे दूँ, sample speeches भी दे दूँ, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं बोलूँ the और आप next word predict कर लें. On the contrary, अगर मैं 3 words दूँ, the work here, then it is much easier for you to make a prediction for the 4th word. So this is a situation in which I need multiple inputs before generating the output. सही है.
Similarly, I can have a time series like, let's say I have a table here. So I can draw a table. So this is the time series that is going along with time. And I will say, okay, I will take 6 days. Okay, I will present the data here for 6 days. And then I want a prediction for the output neuron. So I'm going to generate the output neuron only when I want a prediction. Not at each timestamp, because I don't want a prediction at each timestamp. I have to put in timestamp because the data that I'm giving wants me to put different timestamps for different words or for different rows here of the time series. That's the thing. उसकी requirement है data की कि वो इस तरह करे. सही है. तो इसलिए मुझे मजबूरन हर timestamp को अलग करना पड़ रहा है, unfold करना पड़ रहा है series को. But I will only generate the output when I want it. Okay. So this is a very basic for set of formula which will help you understand how the feed forward phase happens. So you start by specifying the initial state, which is this one. And then first you calculate this one, which is pretty simple for you to understand. The input at xt gets multiplied by the vector u. So it's just a dot product. And the input from the previous timestamp gets multiplied by the vector w, which is here, and plus the bias here, which I told you already, the bias is there. So that's the bias v, okay, the bias value b for this particular neuron. In fact, it's a bias vector because it's the same bias which is across the whole time series chain. Okay. So that is going to give me the activation at time t. And I told you, okay, that's the activation value. And to generate the ht value, you can देखें इस neuron के inputs आप देखें. One input coming from the previous hidden, the other input coming from the actual data, the external signal. So I have these two inputs here, plus the input from the bias, and that is going to give me the value of the activation. And when I put the activation in the tangent hyperbolic function, then I have the value of ht. So that's how I get ht. And that is what I was meaning जब मैं आपको बता रहा था कि ht को सेव रखना पड़ेगा जब तक के पीछे से बैक प्रोपगेशन आके, क्योंकि ये ht की वैल्यू इस्तेमाल होगी जब मैं इस टाइम स्टैम्प के ऊपर w, v और u को अपडेट करूंगा. सही है, समझ में आ गई? I am going to use the value of ht and also ot. For example, when I update the value at a particular timestamp, I have to use the value of ht and ot. Therefore, मुझे उसको संभाल के रखना पड़ेगा, स्टेट को याद रखना पड़ेगा जब तक कि बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम से वेट अपडेट नहीं हो जाते. I have to remember ht, and then I can present the next mini batch. ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? Yes, sir. जी सर. सर खाली एक और सवाल है इससे रिलेटेड, वो ये कि इसका मतलब ये कि जिस तरह टाइम स्टैम्प बढ़ते रहेंगे जो मेमोरी इंटेंसिव होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा कि हम इसको कंप्यूट नहीं कर सकेंगे. नहीं, दोबारा पूछिएगा, सॉरी मुझे आवाज सही नहीं आई. सर कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इसके टाइम स्टैम्प बढ़ते जाएंगे ये मेमोरी इंटेंसिव होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम इसको फिर कंप्यूट नहीं कर सकेंगे मेमोरी के इशू की वजह से. नहीं, आप प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले अपना इनपुट साइज डिफाइन करेंगे. व्हाट इज गोइंग टू बी योर इनपुट साइज? जितना इनपुट साइज होगा उतने ही आप टाइम स्टैम्प्स यहाँ पे जनरेट करके उतने ही फॉर्मुलिज्म ये बनाएंगे, या आप नहीं बनाएंगे तो LSTM बना देगा. तो इन द प्रीवियस केस जो मैंने वर्ड्स की मैं बात कर रहा था, let me write it down again ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि the laptop here created some problems. ठीक है, when the class was about to start. It was embarrassing, whatever. ठीक है. अच्छा, अब ये होगा, मैं कहता हूँ कि यार I want to predict the fourth word. So if I want to predict the fourth word, this is the formalism that I'm going to use. ये जो डायग्राम आपके सामने है, ठीक है, कि 3 इनपुट्स मैं दे रहा हूं आपको. पहली, sorry, not this one. So if I want to predict the fourth word, then in this case, let me just draw this.
This is not going to be there. I don't want any prediction when I present the first word. I don't want any prediction here. ठीक है? Neither computation of loss. There is no test. There is no training data. There is no y value here. ठीक है? The y value first आपका जो data है, this is the first input vector. So this happens at in xt at xt minus xt the xt plus 1 and xt plus 2. या इसको अगर आप थोड़ा सा उस पे कर लें, अगर आप t पे यहाँ खड़े हैं, so this is xt minus 2 xt minus 1 and here at again xt. तो I will present मैं मेरा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कौन से वेट वेक्टर अपडेट होंगे? u and w only. There is no v vector here to learn. ठीक है? Then I'm going to present the laptop word here. Again, I'm going to update u and v through back propagation. There is no layer here. सही है? And then I'm going to present the word here. ये मैं पहले मिनी बैच के पहले इनपुट की बात कर रहा हूँ, पहले मिनी बैच के पहले इनपुट की बात कर रहा हूँ. ठीक है? तो the first 3 words when I predict here, then I'm going to tell it कि भाई फेंको बाहर, generate the output. It is going to generate a vector of words with their probabilities. I'm going to pick the most probable and compare that with y, which for me it is now created. मेरे लिए तो created है ना word जो predict करना चाहिए. पता चला उसने start को predict कर दिया है. So यहाँ पे एक loss function में error आ जाएगा. सही है? Error आ गया. ठीक है? अब अगला क्या है? Laptop here created. Now this becomes my next input. ये एरर वैल्यू अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है. ठीक है? अब लैपटॉप यहाँ पे आया, हेयर यहाँ पर आया और क्रिएटेड यहाँ पर आया और आउटपुट पे उसको देना चाहिए था सम. लेट्स से कि उसने दे दिया क्लास. अब फिर एरर आ गया. अब अगला आउटपुट क्या होगा? हेयर क्रिएटेड सम एंड इट शुड प्रेडिक्ट प्रॉब्लम्स. फिर क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स, इट शुड प्रेडिक्ट व्हेन. अब ये है कि इन दोनों टाइम स्टैम्प्स के लिए आई डोंट नीड एनी आउटपुट. मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं तुम्हें तीसरा इनपुट दूं तो फिर तुम चौथा आउटपुट जो है उसको प्रेडिक्ट करो. सही है? समझ में आ गई बात की? जी भाई. तो आपका जो सवाल था ना, उसका जवाब ये है कि जो इनपुट साइज है कि आपने कितने टाइम स्टैम्प यूज करने, दैट इज डिटरमिन्ड इन एडवांस. ऐसा नहीं है कि ये मुस्तकिल चलती जाएगी. वो तो समझाने के लिए कहा था कि इवन इफ यू टेक टाइम सीरीज अप टू 500 टाइम स्टैम्प्स के बाद प्रेडिक्शन जनरेट करो तो आप कर सकते हो. आपको समझाने के लिए था वो. इन द केस ऑफ अरीमा मॉडल्स वगैरह वगैरह वो आप नहीं कर सकते. ठीक है सर? मेरा सवाल इससे रिलेटेड था कि मिनी बैचेस जिस तरह हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वो मिनी बैचेस के दौरान तो वोट करता रहेगा, मिनी बैचेस का साइज जिस तरह इंक्रीज होता रहेगा तो फिर जो है मेमोरी का इशू आ सकता है. नहीं, देखिए मिनी बैच का जो साइज है ना उसमें मेमोरी का इशू नहीं आएगा, क्योंकि मिनी बैच का साइज नॉर्मली या तो 32 होता है या 64 होता है. मैंने तो इससे ज्यादा कोई मिनी बैच साइज नहीं देखा. ठीक है? तो 32-64 तक आपको न्यूरॉन्स के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है. उसके बाद आपका स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट चलेगा या बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम चलेगा. वो सारी चीजें वेट अपडेट हो जाएगा, फिर आप अपनी मेमोरी को रिलीज कर दें. इसमें होगा ये कि टाइम लगेगा. मतलब 8 GB रैम पे भी ये चल जाएगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत खींचेगा ये. तो वो जो जिनके पास द पीपल हु हैव जीपीयूज, आई हैव टोल्ड यू कि अभी जो मैंने जो कोड सैंपल्स लिए हैं नेट से, आई हैड अ वेरी टफ टाइम, क्योंकि वो मुझे पूरे एरर्स दे रहे थे. वो मैंने 2 कोड सैंपल लिए और दोनों ने जो है ना माशाल्लाह से बहुत टफ टाइम दिया मुझे. ठीक है? आज भी मैं बैठा रहा हूँ देखता रहा हूँ उसको, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों चल गए. एक्चुअली द पॉइंट इज के टेंसर फ्लो के 2 वर्जन है ना, टेंसर फ्लो 1 एंड टेंसर फ्लो 2. अभी आजकल हम 2 पे जा रहे हैं, तो वर्जन 1 के साथ बहुत सारी ब्लॉग्स लिखी हुई हैं और आपको अभी भी वो इस्तेमाल हो रहा है. तो उसमें आपको यहाँ पे कंपैटिबिलिटी ऐड करनी पड़ती है. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि केरास जो है दैट वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट, इट वाज एन इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी, बट नाउ केरास इज पार्ट ऑफ टेंसरफ्लो.
अब आप देखेंगे केरास के फंक्शन tf डॉट केरास डॉट लेयर्स डॉट सीक्वेंशियल, ठीक है। सो उसके थ्रू भी कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आते हैं, सही है। तो उसकी वजह से अच्छा, तीसरा मसला ये है कि मुझे ये भी एरर मिला कि जो तो मेरी लाइब्रेरी है कूड एनएन, यानी कूडा न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी, जो कि एक्चुअली आपका जीपीयू इस्तेमाल करती है, वो आउटडेटेड है, सही है। तो मैंने फिर उसको कल मैंने कहा कि भाई ठीक है ना इस्तेमाल करो, फिर उसको बड़ी मुश्किलों से मुझे उसका वर्क अराउंड मिला। तो उसमें जो LSTM मैंने चलाया ना, तो उस तकरीबन 3-4 मिनट लग गए, हालांकि वो बहुत ही बेसिक सा था, सही है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि कूड एनएन का वर्जन हो गया, फिर आप टेंसर फ्लो वाले यूज करें, वो इसके ऊपर ब्लॉग्स आपको कम मिलेंगी। जो टेंसर फ्लो का केरास वर्जन यूज कर रहे हैं, पुराने के ब्लॉग्स आपको ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चक्कर होता है, लेकिन ये कि इसी तरह ही चलाना पड़ता है काम। सर मैंने अपने पास भी चला के देखा था, तो मेरे पास वर्क अराउंड ये था कि मैंने ना पाइथन 3.9 या बल्कि अभी 3.10 भी आ गए, उसकी जगह 3.7 पे इस्तेमाल किया, तो वो काफी ज्यादा स्टेबल था, फिर चल भी गया। हाँ देखें, हर सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है ना, वो उसके लिए मामला अलग ही होता है। मैं तो इस चीज का कायल हूँ भाई, आप अपने लैपटॉप के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर लो बस। मैंने तो ये सीखा है। पाइथन मतलब पाइथन को पीछे लाने का भी प्रॉब्लम है ना कि उस पे फिर ये होता है कि कुछ लेटेस्ट फीचर्स आपको ना मिलें। लेकिन पाइथन क्यों आपने वो की, पाइथन से उसका क्या ताल्लुक है? दैट सर शुड नॉट पता हैव। नहीं, ये तो मेरे भी समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने किसी एक ट्यूटोरियल को फॉलो करके पाइथन 3.7 के ऊपर लेके गया कि एनाकोंडा में नया इन्वायरमेंट बनाते हैं ना, तो उससे मसला रिजॉल्व हो गया। हो सकता है कि पाथ इन्वायरमेंट जो वेरिएबल होते हैं वो भी सेट करने होते हैं, शायद उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। पाथ तो खैर वो तो बाय डिफॉल्ट एनाकोंडा सेट कर देता है। जो आपका वो है ना टेंसर फ्लो, माइट बी द वन जो कि आपको डाउनग्रेड करना पड़े। बहरहाल चलें, ये तो एक अलग बात है। चले आपका चल गया तो अच्छी बात है। बहरहाल so this is how the activation is calculated here. Then as far as this is a bit messed up यार, एक मिनट ठहरना। हाँ, so then as far as this OT is concerned, तो OT actually OT में ये होता है कि where was this sorry about this the B vector was here and C plus VHT. अच्छा, तो here we have C. अच्छा सही है। So when I want to generate H, ये भी याद रखिएगा, एक at a given time stamp at a given H, when I want to generate the next H, I use the bias B, and when I want to generate the output at that timestamp, then I use the bias C. ये दोनों अलग चीजें, because I am हर टाइम स्टैम्प पे दो चीजें इनपुट आ रही हैं, दो चीजें आउटपुट पे जा रही हैं। दैट्स द थिंग। सो द टू थिंग्स दैट आर कमिंग एट द इनपुट आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन along with the bias B. And if I want to generate the output, so the output is basically uses the V matrix. The V matrix gets multiplied by the hidden value here. सही है। तो HT minus 1 into V equals to OT minus 1. Obviously plus C, so I will have to add C here. So the bias, both the biases are being applied on the hidden neuron, but to generate two different outputs. ठीक है। So ये याद रखें। और how do you calculate wire hash? Is just the softmax जो कि मैंने आपको बताया कि softmax फंक्शन आप लगा लेंगे तो उसमें आपका वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको let me see what's हाँ, so it's something like this कि जो वार्म अप के लिए किसी ने कहा था कि I have there could be a warm up phase as well. I could have a warm up phase. ये प्रोग्राम करना पड़ेगा कि इनिशियल, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि the system cannot start making predictions right away. It is going to take a lot of time to converge if you want the system to do that. Even जो हमने अभी केस देखा कि 3 words input, 4th output, even that is not going to start predicting right away. That is also difficult. हाँ, अगर आप एक warm up phase रखते हैं
वार्म अप फेज में ये है कि यू गिव इट लाइक 20 वर्ड्स और 30 वर्ड्स टू, ताकि उसको थोड़ा सा पता चल जाए कि भाई ये कहानी है, सही है। तो इस तरह की कहानी चले तो ये उसके लिए काफी, क्योंकि इट इज लर्निंग यू and W, the vector U, the matrix U and W are being learned at each of these 23 timestamps. तो वो सीख रहा है, सीक्वेंस को सीख रहा है, लेकिन उसको प्रेडिक्ट कुछ नहीं करना, ठीक है, उसको प्रेडिक्ट कुछ नहीं करना। यू स्टार्ट मेकिंग प्रेडिक्शंस कि मैंने t इक्वल्स टू 23 पे इनपुट दिया, तो अब t इक्वल्स टू 24 की प्रेडिक्शंस आना शुरू होगी। And then you know you can just ये सारा रिकरेंट ऊपर चल रहा है, यहाँ पे आपने इनपुट देना छोड़ दिए, लेकिन आप चाहें तो आप दे भी सकते हैं, या आपके अपने ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से करते हैं। एंड देन यू कैन मेक अ प्रेडिक्शन कंपैरिजन हियर विद द एक्चुअल, दिस इज ऑब्वियसली द y hat and this is the y, and just compare loss function, back propagate and then calculate the gradients and hence the weight values, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि you can, if you want, you can input like this warm up phase x1 to xt, आप उसको एक दफा इनपुट पे कर दें, एंड देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग प्रेडिक्शंस फ्रॉम xt+1। ये एक आपके एक उसके ऊपर हो सकती है, इसको आपको जरा देखना पड़ेगा किस तरह करते हैं, मैं आपको बेसिक चीजें बता दूंगा। सो बस ये थोड़ा सा कर लेते हैं, ये इक्वेशन है, इज द सेम नेटवर्क जो कि हमने किया था। अच्छा, इसमें एक और चीज बहुत जरूरी है जो कि आपको बताना है, वो ये है कि देखें, आप चाहे तो आप लॉस निकाल लें हर टाइम स्टैम्प पे, बट यू नो द एक्चुअल लॉस इज व्हेन यू वांट द प्रेडिक्शन टू हैपन, सही है। तो यू कैन, मतलब जब आप एक हिडन लेयर क्रिएट करते हैं और एक आउटपुट न्यूरॉन देते हैं, सही है, तो मैं कहता हूं कि इनपुट लाइक 4 इनपुट्स हैं, तो मुझे फोर्थ टाइम स्टैम्प के ऊपर मुझे आउटपुट चाहिए, नहीं 4 चीजें तो मैं दूंगा, तो मुझे 5वीं चीज प्रेडिक्ट करके दो। सो आर्किटेक्चर वही होगा कि 4 चीजों पे, 3 चीजों के लिए यू आर नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग। लेकिन अगर पाइथन या टेंसरफ्लो जो है, इट इंप्लीमेंट्स दिस थिंग, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी वाई इनपुट हियर, दैट्स द मेन थिंग। मैं यहाँ पे उसको कोई वाई इनपुट दे नहीं रहा हूँ। एक्चुअली होता ये है कि कुछ लोगों का नजरिया ये है कि वी शुड डेफिनेटली क्रिएट द लॉस, कैलकुलेट द लॉस एट ईच टाइम स्टैम्प। Although in this case the problem जो मैंने आपको बताई है, L3 is the only loss that I'm interested in, because मैं तो ये बात कर रहा हूँ, I'm saying कि HT+1 incorporates information about all the you know previous things. Ditto for OT+1, क्योंकि HT+1 generates OT+1. So if I have the loss function, then it basically is a measure of the loss across all the previous timestamps जो कि मैंने अपनी सीरीज में रखे हैं। बट सम पीपल से कि नहीं यार, ये तरीका सही नहीं है, आप ऐसा करें कि आप हर मौके पे लॉस निकालें, आप किसी तरह लॉस कैलकुलेट करें, और जो यहाँ का जो लॉस है दैट इज इक्वल्स टू L प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3। there is a class of people who want the system to do this, and there's a class of people who just ignore this and just calculate the loss here. So वो प्रोग्रामिंग के अंदर आपको करना पड़ेगा कि आप किस तरह से उसको करते हैं, but that is how these two mindsets are going along, ठीक है। So the total loss is actually the sum of losses over all the timestamps। जो मैंने आपको बता दिया है कि ये दो तरीके से लोग इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। So this the loss function is the negative log likelihood of yt given x1t. So I'm giving you a sequence of input data. You have the sequence of output data. Now, what is the likelihood of the parameters w, u, v, b, c to generate this data from this data? That is what this likelihood function is telling us, okay? So what is the likelihood that what are the most likely values of w, u, v, b and c that are going to generate this given this data? Okay, that is how you talk about the likelihood. So you can sum up the likelihood over all the timestamps जो कि अभी तक आपने देखे, that means this plus this plus this, and it is the log, negative log of the probabilistic model जो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि the probability that I get y based on all these inputs,
which is what I want. Like मैंने तुम्हें ये 10 लफ्ज दिखाए, अब 11वां वर्ड प्रेडिक्ट करो. That is what I have to calculate. So ये probability किस तरह कैलकुलेट होती है? ये softmax फंक्शन आपको probability बताता है. ठीक है. The softmax function, I told you that I apply the softmax function that is going to give you a vector of probabilities. So that can tell you, help you calculate the likelihood function. Based on that vector of probabilities, you can calculate the loss, and from the loss, then you can back propagate and update the weights and gradients according to that loss. So ये इसकी मिसाल ये होगी कि the gradient descent algorithm is making those values of W, U and V most likely जो कि x से आपको y जनरेट करके दे दें for any given value of y at a given time stamp. सही है. देखें कुछ चीजें शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हों, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्चुअल जो बात है वो क्या है. लाइक्लीहुड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइक्लीहुड का कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज यूज्ड टू प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग y फ्रॉम x. तो पैरामीटर्स उस तरह के लर्न करने जो इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर दे. Because we have the probabilities here based on the softmax function, so we can apply the concept of likelihood, and from the likelihood function calculate the error and then back propagate that to update the values of u, v, w, and b and c. So to minimize the loss function, it will take, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. अगर हम ट्रेडिशनल back propagation algorithms से चलें, so it is going to take order of tau time, where tau is the number of timestamp, which is very expensive operation. The runtime cannot be parallelized because the whole architecture is sequential. ये हमारा problem है. States computed in the forward pass must be stored until they are reused at their own time in the backward pass. So we have to use back propagation through time, which is a different approach. ठीक है. अब ये बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम जो है वो दिस इज समथिंग एल्स. मैं अभी इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, ये सारी इक्वेशंस यहाँ पर हैं. मैं अभी चाह रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन दिखा दूं. अच्छा, ये दो एग्जांपल दिस द फर्स्ट एग्जांपल जब मैं बना रहा था तो अभी वो काम चल रहा है. ठीक है. उसमें आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ एरर्स, तो ये मैं अभी आई एम नॉट देयर येट. तो this is the one which was completed yesterday. So ये डेटा है शैम्पू सेल्स का. ठीक है. इट्स अ वेरी फेमस यूनिवेरिएट टाइम सीरीज डेटा सेट जो कि कैगल से आपको मिल जाएगा. इट्स रगड़ा हुआ है. आई मीन इट्स अ सॉल्व डेटा सेट. ठीक है. और आई मीन इट्स जस्ट टू आई मीन LS the recurrent neural network is not for this small data set. बहुत ही छोटा डेटा सेट है. लेकिन ये कि जस्ट यू नो बेसिकली ये एक अली बाबा का था. अली बाबा के मुझे मिला था एक डेटा सेट है, टाइम सीरीज का है. इनका एक सेंसर टेबल, इट्स अ ह्यूज टेबल. लाइक अली बाबा क्लाउड की जीपीयू यूजेज का ये डेटा है. सो इसको प्रेडिक्ट अगर आप करते हैं तो उसमें भी कुछ तुक बनता है. देयर इज लॉट ऑफ पैरामीटर्स टू प्रेडिक्ट हियर. ठीक है. सो मे बी दिस विल बी वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि आपको दे दिया जाएगा. So let's start this way. Whenever you have the time series, so obviously you need to first of all fix your timestamp. So you can define a function here. So I'm following the recommendations of Jason Brownlee from Machine Learning Mastery, because I think he's उसकी जो website है वो one of the most detailed ones and one of the most effective ones. लेकिन कोडिंग में एरर्स आते हैं, मैं बता दूं आपको. बहरहाल सो दिस इज द टाइम स्टैम्प. बहुत पुराना है शैम्पू सेल्स का. तो shampoo.csv, you can also look at this here. So in total we have just these 36 rows. So it's a laughing data set basically. ठीक है. So अब हमने क्या किया, header 0 header 0 का क्या था, what was header 0? Yeah, so we don't need to put any header there, it's already there. Parse dates,
put that as the index. ठीक है? Index column, there's no index column. We are not specifying any index column because the index is the date column. Date parser equals to parser. So I call the parser function. So it's going to return this date according to this format. So it's telling you the format. So जितनी भी dates इसमें shampoo sales के अंदर हैं, all of these dates are going to be stripped into this particular format. ठीक है? And obviously let me just clear the outputs ताकि आपको थोड़ा सा वो हो जाए. So I just यहाँ पर तो ये वो थोड़ा सा ट्रिक्स थे. TensorFlow.keras import sequential, TensorFlow.keras.layers import dense. So I added these basically. I think उसने directly keras का इस्तेमाल किया हुआ था. बहरहाल. So now, so just import this data. Oh, it's taking a lot of time. Yeah, so I don't know why. Wait करते हैं. Okay, so we're going through this file of the shampoo sales. Okay. So for the persistence model, what is happening here? History -1. So the last element of the training array gets appended to predictions. Okay, in the first case. And then what I am appending to the history is the test. Okay, so that's the, the first element of the test set. What's going to happen in the next, this is for the first element of the test. ये testing data का जो पहला element है, उसके लिए ये काम होगा कि predictions में, which is an empty list initially, I will append the last element of the history, and then I'm going to observe the test and observe the test value and just क्या कहते हैं, put that in the history. Next में जो ये एलिमेंट किया था वो मेरा अगले स्टेप पे बन जाएगा और ये वाला मेरा रियल वैल्यू बन जाएगी. तो व्हेन आई फिनिश दिस, प्रेडिक्शंस और टेस्ट को जब आपस में कंपेयर करेंगे आप, सो व्हेन यू कंपेयर द टेस्ट एंड प्रेडिक्शंस, यू कैन सी के the predictions are just the previous test values. That's called the persistence model. ठीक है, समझ में आ रही है? So the first value is the last value of the training set जो कि हमने यहाँ पे डाली थी. ये मैंने पढ़ाया हुआ है पिछली बार ना ML1 में, but it was मैंने इतना clearly नहीं बताया था, but I gave you the code. So the first value is the last value of the training set, और उसके बाद the value for this, the prediction at any given timestamp is just the the previous test value. So that is called the persistence model. और इसकी logic ये है कि just make the next prediction based on what was predicted the last time, which is the basically आप test का जो आप कर रहे हैं मामला. ठीक है, so ये आ गया. तो अगर आप इसका वो निकालते हैं, प्लॉट करते हैं इसको, you can see that there's a difference between, it follows the same pattern basically, but this is RMSE को आप देख रहे हैं 136.761. That's quite large. So RMSE should be very close to 0. So this RMSE means nothing for us basically. So this is the आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है, उसकी वजह से RMSE बढ़ रहा है. ठीक है, तो बहरहाल ये आपके पास एक बेसलाइन मॉडल होता है, परसिस्टेंस मॉडल हम कहते हैं. अच्छा, now you need to understand what I told you also in ML1 is that the time series data has to be converted to a supervised learning problem. उसके लिए वो use the shift operator. So we shift the time series 1 or 2 timestamps into the past. सही है, ताकि हम उसको एज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम को मॉडल कर सके. ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है. 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं टाइम सीरीज डेटा की.
एक तो ये वाली रिक्वायरमेंट होती है कि आपने शिफ्ट ऑपरेशन निकाल के सुपरवाइज टाइम सीरीज क्रिएट करनी। दूसरा डिफरेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक द सीरीज स्टेशनरी, ठीक है। सो इन दिस केस वी कैन क्रिएट दिस फंक्शन, और मैंने बता दिया कि लैग जो है वो 1 है, सो लैग इक्वल्स टू 1। सो फॉर आई इन रेंज 1 to lag plus 1, तो लैग 1 है, 1 to 2 तो इट्स ओनली गोइंग टू 1, तो वो 1 से उसको शिफ्ट कर देगा। I append the columns, I add the columns to the current data frame, and then I fill NA तो इस data set पे है, and then I return the data frame. So it's the same thing. I repeat the same thing again, and then I just print this. So you can see that I have created 2 columns now. One is the original column 0, 266, 145.9. जैसे ये जो ओरिजिनल ट्रेनिंग सीरीज चल रही थी, एक तो उसी सीक्वेंस से चल रही है। The other series is the shifted series, बल्कि this is the original series 266, 145, 183, and the first column is the shifted series which is shifted 1 timestamp before. सही है, तो ये हमने उसको पीछे शिफ्ट कर दिया। 145 जो है वो you can see here के 266 shifted here, this shifted here, this shifted here, this shifted here, blah 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 blah, ठीक है। So obviously इससे ये वैल्यू 0 हो गई तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आप 3 करते हैं यहाँ पे, अगर आप 2 करते तो दो कॉलम्स आ जाते एक के बजाय ना, फिर इसमें हो सकता है कि 2 कॉलम आ जाए। तो मतलब इसको करके देखना पड़ता है कि यानी कितना आपने उसको रखना है लैग को, दैट्स व्हाट यू नीड टू सी। अच्छा, then obviously you create a different series, तो डिफरेंस करने के लिए we have the dot diff function, लेकिन उसने जेसन ने इसको इस तरह से किया हुआ है, data set I minus data set I minus interval in our case is just 1, तो data set I minus data set I minus 1, तो पिछली इंटरवल से आप डिफरेंस कर दे, that is difference of size 1। अगर उससे फर्क नहीं पड़ता तो आप वो भी डिफरेंस कर सकते हैं। अच्छा, मेन चीज जो है वो जो आपको समझनी है कि when you make a prediction, because you will be making a prediction on the difference data, right? So when you make a prediction, then you have to inverse the difference as well, ताकि आपको prediction की सही value मिल जाए। That is very important. Otherwise, it is not going to make any sense to you. So ये वो function है जो कि इसके anti जा रहा है। Data set I minus data set I minus 1, so that is y hat, which is the predicted value plus history of minus interval, where interval in this case is our interval, just the single timestamp। हम एक टाइम स्टैम्प पे जा रहे हैं, हमारा लैग सिर्फ 1 है, और y हैट हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। हिस्ट्री जो है ना वो हिस्ट्री इज आई थिंक द ऑफ द हिस्ट्री क्या था यहाँ पे, आई थिंक वी डिड डू द हिस्ट्री है, या हिस्ट्री डॉट अपेंड दिस। सो हिस्ट्री कंटेन्स द टेस्टिंग डेटा। सो यहाँ से उसको करने के लिए आपको शायद समझ नहीं आई बात की। द टेस्टिंग डेटा विल बिकम द बेसलाइन ऑन विच वी आर गोइंग टू रीजनरेट द डेटा, जो कि एक्चुअली होना चाहिए था। डेटा सेट I minus data set I minus 1, that becomes a different series. If I want to regenerate the original series, यानी the predicted value की actual value लेने के लिए I have to take the data from the test data, the last value from the test data, ठीक है। बहरहाल आप इसको करके देख लें। So we read the data again. So with differences, so it's going to be very different now. Which I think मैंने ये नहीं किया था, sorry. Yeah, so I mean this is the original training data, and now this is the the difference series. So the world of distance 145 minus 266 equals to minus 120. Similarly, 183 minus 145 equals to 37.2, and so on and so forth. So that's a different series. So we saw 2 things now. We saw the series which has been shifted, and we saw the series which has been differenced. Okay? And obviously, you also have to need to have this inverse difference. The inverse difference series जो है ना वो आप इसी तरह ही create करेंगे। इनवर्स डिफरेंस सीरीज आपकी वो आ गई, ये -120.1 है, तो आपने जब इनवर्स डिफरेंस किया तो यू जनरेट द सेम सीरीज, ऑल्दो यू मिस द फर्स्ट वन, बिकॉज यू विल मिस द फर्स्ट वन। आपने डिफरेंस किया है
तो पहले एलिमेंट तो आपको 0 ही आ जाएगा. So we'll miss the first element, but the other series is going to be generated exactly like that. सही है. So that's very important to understand कि you have to inverse the difference for the predicted value. सही है. अच्छा, उसके बाद one of the main things जो आपने करनी होती है वो आपने करनी होती है min max scaling for the time series data. For example, जो मैंने आपको दिखाया था the data for Alibaba, or let's say the data for Tesla. So you can see that the Tesla data is all in one particular range except the volume. So there's a typical closing stock जो Yahoo stock से आप download कर सकते हैं. So it's all in the same range except the volume. So typically you do want to scale it. So I mean 50s is not a good thing. So we can, like जैसे हमने बताया था कि LSTM की केस में -1 to 1 works good. So min max scaling में -1 to 1 is good. So scalar dot fit, scalar dot transform x, p dot c, scale x, blah blah blah, and then we also have to inverse it. So whenever we have the prediction, you have the difference, you have to inverse difference it. If you have scaled it, then you have to inverse scale it as well. So yeah, so ये scaled आ गया -1 to 1 में, and then it generates it back again. सही है. तो ये वो आपका फंक्शन है जो कि स्केल और इनवर्स का ही उसने दोबारा से लिखा है, तो जस्ट एग्जीक्यूट दैट. अच्छा, नाउ दिस इज द मेन थिंग के the LSTM function, this has been created, obviously this function has been created. So in this case we provide the data, the training data, the batch size, the number of epochs, and the number of neurons. ये जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है ये एग्जैक्टली वो चीज है जो कि मैं आपको बता रहा था कि हाउ मच इनपुट्स यू हैव टू प्रोवाइड हियर. दैट्स व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग. सही है. तो जितनी इनपुट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो दैट बिकम्स द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, एंड दैट इज बेसिकली जो LSTM का जो पहला आर्गुमेंट है दैट इज के आपका इनपुट का साइज क्या है. सही है. तो ये चीज आप इसको याद रखें. अच्छा, उसके अलावा ये है कि न्यूरल इसमें जो, okay, let's see first what is happening here. So X basically includes all the rows of the trainer. -1 is the last column, तो उससे पहले का column एक ही column है, तो it's going to include all the data, and the Y is going to become the last column, which is actually the actual value that we want to predict. So in this case जो train है हमारा, let me see how that looks. We had the two values, right? अच्छा, ये अभी हमने रन किया नहीं है इसको, तो पूरा अभी चल रहा है ये. I think we shifted it twice. So this, if I execute this, तो बहरहाल चलें मैं आपको बता देता हूँ कि this is your training and Y is the what you want the prediction to happen. Although मुझे ये train का जरा चेक करना पड़ेगा कि train अभी अंदर input पे मैं क्या, वही नीचे से चेक कर लेते हैं. ठीक है. The X needs to be reshaped in this size. So X dot shape 0, 1 is the time lag. 1 is the time lag. Shape 1 is the output neuron. So I'm just looking at one output neuron. So this is the time lag. This is the output neuron. And this is the, I think, the batch size. This is the batch size. X dot shape 0 is the batch size. Basically, LSTM का जो neuron है, LSTM को तीन चीजें चाहिए होती हैं batch input के ऊपर. पहला तो ये चाहिए होता है कि what is your batch size? In our case, it could be like 32 or maybe 3 or 4. In this case, batch size is just 1, because the data is very small. So एक का ही batch size है. This is the time lag. Time lag in our case is just 1. And this is the output neuron. The output neuron भी हमारे case में is just 1. It's just one output neuron जो कि हम करवा रहे हैं. ठीक है. So this is the model dot add dense 1. So just one neuron here. I apply this mean squared error along with the atom.
and then I apply model.fit for the number of epochs जो मैंने उससे मांगे हैं. So उसमें I give x, I give the vector y, then obviously epochs, I give epochs is just 1, batch size equals to batch size, verbose 0, shuffle false. अच्छा shuffle false इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि what happens is कि LSTM can start shuffling the data in a batch by default. But if we start shuffling the data, then the sequence is going to be lost, right? So I don't want to lose the sequence here. So therefore I said shuffle equals to false. And in this case, when initializing the LSTM neuron, I say stateful equals to true. क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि एक particular batch के लिए, एक particular mini batch के लिए, the data needs to be stateful. सही है? When the epoch is over, then you can reset the states like we have done here. When the epoch is over, model.fit का मतलब है कि after each epoch, the gradient descent is going to be executed. Epoch गुजरने के बाद. और हमारे केस में मतलब ये है कि एक ही epoch है और नहीं number of epochs ये है. Number of epochs तो मैंने यहाँ अच्छा यहाँ पे number of epochs होना चाहिए लेकिन I think हमारे केस में इसने override किया हुआ है. We can substitute that by number of epochs. Let's say कि 2 या 3 epochs हैं इतने छोटे डेटा सेट के ऊपर. सही है. तो हर एपॉक के बाद आपका जो है ना वो रीसेट स्टेट्स आप कर सकते हैं. बट जब तक एपॉक खत्म नहीं हो जाएगा, दैट मींस कि वेट अपडेट नहीं हुए तो आप रीसेट स्टेट्स नहीं कर सकते. ठीक है. सो दैट्स द थिंग हियर. एंड देन रीसेट स्टेट्स क्या करते हैं? व्हेन यू फिनिश वन मिनी बैच, क्योंकि मिनी बैच के बाद वेट्स अपडेट होंगे, देन यू कैन रीसेट द हिडन स्टेट्स ऑफ द LSTM नेटवर्क. ये बात की थी ना हमने कि यहाँ पे यही हो रहा है ना. यू कैन सी हियर कि व्हेन वन लूप इज वन एपॉक, राइट? सो व्हेन द एपॉक फिनिशेस देन यू कैन रीसेट द स्टेट फॉर द नेक्स्ट एपॉक. क्योंकि नेक्स्ट एपॉक में तो डेटा चेंज हो रहा है तो वो आप दोबारा से हिडन स्टेट्स लर्न कर लें. सर अगर नहीं भी करते तो इस तरह आप अज्यूम नहीं कर सकते कि वो रैंडमली सेट हुई है. नहीं मेरे भाई जो वैल्यू h है ना, h, ठीक है, जो चीज हमने अपडेट करनी है वो क्या है? वो है u, v, w, b एंड c. ठीक है. हमारा इनसे कंसर्न है. प्रॉब्लम ये है कि इनको अपडेट करने के लिए आई नीड द वैल्यू ऑफ द हिडन स्टेट टू बी स्टोर्ड अंटिल दीज वेट्स आर अपडेटेड. अब ये वेट्स अपडेट होते हैं मिनी बैच के बाद. तो जब तक मिनी बैच मेरा खत्म नहीं हो जाता, जब तक पूरा मॉडल फिट नहीं हो जाता, तो मुझे ये सारी की सारी स्टेट्स जो है ना वो स्टोर रखनी पड़ेंगी जब तक कि मेरा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट चल नहीं जाता और ये सारे वेक्टर्स अपडेट नहीं हो जाते. जब मेरे वेक्टर्स अपडेट हो गए एक मिनी बैच के लिए, देन आई कैन डिलीट दीज टेम्पररी वैल्यूज ht and ot because I'm going to compute them again now for the new mini batch. But I'm not going to compute these again for the new mini batch. ये तो वही रहेंगे जो अपडेटेड थे और ये मजीद अपडेट होंगे. समझ में आ रही बात की? तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसके अंदर क्योंकि हिडन स्टेट्स हमारे पास नॉर्मली जब हम रीसेट करेंगे तो वो क्या होगी? वो कोई रैंडम वैल्यू की सेट हुई होगी या जीरो सेट हुई होगी? देखिए रैंडम वैल्यू तो सेट हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि जब तक आपका मिनी बैच चल रहा है ना, as long as your mini batch is going along, जब तक आपका डेटा आ रहा है, आप उस वक्त तक हिडन स्टेट्स को डिलीट नहीं कर सकते. जब मिनी बैच चल रहा है तो मिनी बैच के अंदर it has to be stateful of what it is looking at. जब आपका मिनी बैच खत्म हो जाएगा, आपके वेट्स अपडेट होंगे, ये सारी चीजें अपडेट होंगी, then you can delete this hidden state which is now has no meaning because you have used the data here to update the weight matrix. Now you can delete it. That is why I say कि reset the states. और reset states हम क्यों करते हैं? क्योंकि to save the cost. Otherwise अगर आप मुझसे कहें कि नहीं भाई hidden states तो आप मुस्तकिल सेव करके रखें, चाहे आप उनको इस्तेमाल करें या ना करें, तो वो तो हम नहीं कर सकते, ना ही हमें उसको कोई वेट शेयरिंग में लाने की जरूरत है. The value ht and ot are only being used to update the weights and the biases. They have no other use. ठीक है. और उस केस में ये है कि
जब आपका मिनी बैच खत्म होगा, आपके वेट्स और बायसेस अपडेट हो जाएंगे, देन यू कैन डिलीट दीज वैल्यूज बाय रीसेटिंग द स्टेट्स, व्हिच इज द डिफॉल्ट LSTM बिहेवियर। बस ये याद रखें, ठीक है। सो दिस इज, ये मैंने आपको बता दिया है कि हमारा 1 है बिकॉज वी आर गोइंग फॉर 1 टाइम स्टैम्प। बैच साइज अगेन 1 है बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल डेटा दैट वी हैव, एंड आउटपुट के ऊपर भी हम एक ही न्यूरॉन जनरेट करें जिसके ऊपर हम आउटपुट निकालें, विच इज दिस वन, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर मैंने वैसे ही बीच में कुछ किया था काम। ये देखिए, दिस इज व्हाट वी आर रीशिपिंग 1,1,1। सो दिस इज द फोरकास्ट मॉडल इन विच आई यूज द प्रेडिक्ट फंक्शन, ठीक है, सो टू गेट द आउटपुट। अब यहाँ पे वो मेन चीज चलेगी कि सीरीज वी रीड द डेटा, the raw values are here and the difference values are here, ठीक है। So the raw values are here, the difference values are here, then the difference values is just one series currently. So just let me इसको प्रिंट करके दे देना ताकि आप लोगों को सो यू कैन सी के फाइनल जो डेटा सेट हमारा जा रहा है वो किस तरह का है, ठीक है। So the difference is here, and now you can see that we have two of these inputs here, the supervised one, क्योंकि मैंने shift कर दिया है ना। So this is what I want. The second column, in this case becomes the y, and the first column becomes the input. क्योंकि second column तो y होगा ना definitely। समझ में आ रही बात की कि second column y क्यों? Because that is the actual series I want to predict. The second column here is only the difference column of this sales. That's it. तो shifted वाला portion है तो हमने shift किया है, the first column that I give as input to the LSTM network, ठीक है, वो input है, and what I want to predict is the output. So now I scale it. Scale हो गया। This is one thing जो कल मुझे बहुत तंग करी थी, तो I had to disable this eager execute. By default TensorFlow 2 में is an eager execution, so we have to disable that if you are using anything. अब हौसला रखें, इंतजार करें। Let me just check the task manager. Oh, sorry about that. Let us check the. So it's executed now, Baral. So the scale function, I give it the train and test. It is going to output me 3 things: scalar and train. So the training data has been scaled. What is the training data? Supervised value 0 to 12. So currently I have not separated anything. So I have given 2 columns. The 2 column है उसमें पहली जो 12-13 वैल्यूज हैं वो यहाँ आ गए, और आखिरी 12 वैल्यूज जो है ना, जो भी इतनी भी हैं वो आपकी उसमें चली गई, ठीक है। So that is the scale data, but now I am giving that to fit LSTM. So now 1,3004, ठीक है। तो fit LSTM में let us, where is the function? Here it is. So train scaled comes here, so that's the scale data. Based on that scale data, now I take out x and y. अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 is the batch size, 3000 is the number of epochs. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि we are not running that for 3000 because मैं यहाँ पे कह रहा हूँ epochs equals to 1. एक epoch के लिए, और batch size भी मेरा 1 है, और न्यूरॉन्स मेरे कितने हैं, और मेरे न्यूरॉन्स have passed here 4. How come 4?
How am I distributing that input over 4 neurons? Can anybody tell me that? सर 4 टाइम स्टैम्प्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. आई थिंक ये वो वाली कहानी है कि देखें, ये जो लेट मी जस्ट पुट द मार्कर हियर. देखें, दिस फर्स्ट वन इज एक्चुअली द इनपुट. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई है ना. ये जो शिफ्टेड सीरीज है ये आपकी इनपुट है. दैट विल कम एट द इनपुट. दिस इज सेपरेटेड एज द प्रेडिक्टेड एक्चुअल वाई, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड ट्रुथ. The actual y value is called the ground truth. So this is the ground truth which is separated as the y vector. और ये बाद में कंपेयर होगा. जो shifted value और difference value, ये भी difference है, इसको हम बाद में anti difference कर देंगे सबको. लेकिन shifted और difference है, that becomes this is the input to the LSTM which is the x. अब 4 का मतलब क्या है? कोई अल्लाह का बंदा बताए मुझे तो मजा ही आ जाए. 4 का मतलब क्या है भाई? 4 का मतलब ये है कि I am inputting 4 numbers and then predicting the 5th one. That's what it means. Then I'm inputting the next 4 numbers and then predicting the 5th one. Then I'm inputting the next 4 numbers and then predicting the 5th one. तो 4 का मतलब इसमें यहां पर ये है. सही है? क्लियर हो गई बात? अब चूंकि the reason is कि I have just set the output neuron as 1 और मैंने इनपुट पे उसको कहा है कि भाई 4 न्यूरॉन्स इनपुट पे हैं, आउटपुट पे 1 न्यूरॉन है. सो इसका मतलब ये है कि वो 4 इनपुट्स लेने के बाद 5वें टाइम स्टैम्प की आउटपुट जनरेट करेगा. कि 1 न्यूरॉन का तो मतलब यही बनता है. ठीक है, बहरहाल इसको देखते हैं. लेट इट फर्स्ट एग्जीक्यूट. सो इट हैज एग्जीक्यूटेड नाउ. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, train scaled for the first column dot reshape this one and then use it to make the prediction. So this is the predicted, these are the predicted values. Predicted values को मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई? Yeah, so the predicted values are there. Now I have to compare that with the test set. So मैं test set को लेता हूँ. I say take the scaled values, separate the x and y, and then call the forecast LSTM model. So where is the LSTM model? Here is the LSTM model which I have learned. और ये कहाँ मैं देख रहा हूँ? This is the model जो मैंने learn किया है और मैंने उसे predict करके ट्रेनिंग डेटा के ऊपर predictions निकाल ली हैं. ठीक है. Now I am taking the test data. टेस्ट डेटा को भी मैंने उसी तरह करना है जैसे मैंने ट्रेन डेटा को किया था. सो आई एम इनपुटिंग दिस LSTM 1x इन द फोरकास्ट LSTM एंड गेटिंग द y hat. सही है. तो फोरकास्ट LSTM इज डूइंग द सेम थिंग एज दिस वन. ये मैंने सिर्फ यहाँ पे ट्राई आउट कर लिया है. फोरकास्ट LSTM इज जनरेटिंग द सेम प्रेडिक्शन वेक्टर जो मैंने यहाँ किया है. दिस इज ये रीशेप किया और y hat से प्रेडिक्ट करवाया. y hat का जो रेलेवेंट नंबर है वो रिटर्न कर दिया. This is going to happen for each row of the test data, I think. So मैंने उसको पूरा मॉडल दे दिया. ठीक है. हाँ, तो ये ना, for I in range length of test scaled for each test value, उस पे हम क्या कर रहे हैं? उसका x और y सेपरेट कर रहे हैं और उसकी प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं फोरकास्ट LSTM से. फिर जो y hat आया है उस पे हम पहले इनवर्ट स्केल कर रहे हैं and then we are doing the invert difference as well. And then finally we are, blah 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 blah. और expected क्या है? Length of train plus I plus 1 raw values जो थी वो expected values हैं. Where are the raw values? Raw underscore values कहाँ थी यार? Just go through that. Yeah, the series dot values जो कि actual हमारी training values थी. ठीक है. So यहाँ पर अब क्या हो रहा है? I have 12 months
predicted equals to 39,391 point this, and expected is 339.70000. I'm just not clear on this raw values, because raw values is the like training values, right? अच्छा तो सही है ना यार, क्या हो गया, रॉ वैल्यूज वही हैं जो सीरीज की हैं. This, where does it go? Yeah, so I read it, then I input this raw values. I have I model. अच्छा, series dot value. So these are just the training input values जो कि डेटा एक्चुअली है. सही है, जो एक्चुअली डेटा है वो पूरा का पूरा सीरीज, वही पूरी सीरीज को प्रेडिक्ट करा दिया उन्होंने बेसिकली ना. अच्छा, इसमें अब देखें ना, मैं आपको बताता हूँ जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, and in this case I have sales from 1 to 36. So अब ये एरे छोड़ दें. आप मुझे ये बताएं कि ये 12 वैल्यूज किस तरह आ रही हैं. सर टेस्ट की आपने पहले 4 वैल्यूज दी होंगी, उसके बेस के ऊपर प्रेडिक्ट किया होगा, वो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि वो पहली प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी. फिर एक 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 विंडो स्लाइड करेंगे, एक टाइम स्टेप स्लाइड करेंगे, फिर वो जो 4 वैल्यू होंगे उसके बेस के ऊपर अगली वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे. इसी तरह अच्छा, बाकी हाँ सारी सही है सही है. ये तो एरे चल रहा है टेस्ट डेटा पे. टेस्ट डेटा में है ही 12 वैल्यूज. टेस्ट डेटा के अंदर द लास्ट ना ये है बेसिकली, ये जो है ना, दीज आर द टेस्ट वैल्यूज विच आर दी मंथ, जो कि पूरे महीने की हैं. ये टेस्ट वैल्यूज हैं. तो ये टेस्ट वैल्यूज हैं 339.7 जो कि एक्चुअल टेस्ट वैल्यू है. तभी यहाँ पे लिखा हुआ है 339.7 एक्सपेक्टेड. तो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू जो कि होनी चाहिए थी, लेकिन प्रेडिक्टेड क्या है 391. सही है. सो 440 333. अब देखते हैं इसका आरएमएसई कितना आ रहा है और प्लॉट करके देखते हैं इसको. सो माय गॉड, इट्स स्टिल वेरी हाई, 110.124. तो परसिस्टेंस के मुकाबले में तो इट्स आई मीन कुछ थोड़ा सा बेहतर है. 136 कल मैंने चलाया था, वैसे 90s में आ रहा था, बट दिस कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रनिंग ऑफ द सेम प्रोग्राम. सो इसमें एक काम जो करके देखने का था वो ये था कि अच्छा, ये दोबारा रन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. बहरहाल, so this was the you could repeat this loop, the LSTM loop. You could repeat it like maybe 50 times or 100 times and then take the average RMSE, और उससे शायद थोड़ा फर्क पड़ जाए, but still the RMSE is very high. और उसकी वजह बेसिकली ये है कि दिस इज अ वेरी चाइल्डिश डेटा सेट. ये तो अरीमा के लिए भी काफी नहीं है. सो व्हाट टू टॉक ऑफ डीप लर्निंग मैकेनिज्म. ठीक है, तो वो तो अभी हम इसको मजीद एक उस पर करके देख लेंगे. यहाँ पे दिस इज फॉर दी टेस्ला फाइल जो कि ओपन वैल्यू हम इसकी प्रेडिक्ट कर रहे हैं. सो दिस टेक्स अ डिफरेंट अप्रोच. अच्छा, अगर आपने केरास यूज करना है तो आई फाउंड आउट कि मुझे ये चीज बीच में डालनी पड़ेगी. इफ आई वांट टू यूज द प्रीवियस वर्जन ऑफ केरास विदाउट टेंसरफ्लो, तो मुझे ये चीज डालनी पड़ेगी. तो बहरहाल वो मैंने कर लिया. सो आई जस्ट did this separate. These are all the files. I imported this Tesla, this the data, or up to row 800. This is the training data. So I take this the first column. In fact, the second column is the open stock. ठीक है. और टाइम स्टैम्प इसका जो है ना वो सही तरह नहीं है, तो टाइम स्टैम्प का उन्होंने इससे बॉदर नहीं किया. सो ट्रेनिंग स्टैट इज 52.44. ओपन स्टॉक प्रेडिक्ट कर रहे हैं. आई डू द सेम थिंग, मैक्स मिनिमम मैक्स स्केलिंग, the scaled one, and then I take the timestamp as 40, the first 40 timestamp, because this file is pretty large. So मेरे लिए जो मामला है वो
फर्स्ट 40 टाइम स्टैम्प्स है, उसके बाद फिर 41st पे प्रेडिक्शन आएगी। सही है, दैट्स व्हाट वी आर एमिंग एट। और मैंने इसी तरह वो शेप्स वगैरह क्रिएट की, तो 740, लेट मी सी हाउ मेनी देयर आर एक्चुअली। सो 1259, राइट? तो 1259 में 800 probably are for the training and the rest are for the testing. 740 for the training and the rest for the testing. And then, you know, in this case, we don't need even that much a complicated LSTM. So in this case, you know, it has been initialized in a different way because we are now using the Keras LSTM model, not the current one. तो उसके अंदर फिर उस तरह का मामला नहीं था। Units 50, I don't know, Units 50, I think I should have Units 40 because I think I should have 40. पर अभी तो इस 50 इसको 50 कर देते हैं। According to that, the 50 should be here. This is probably the verbose output, input shape, the same shape कि आपने उसकी shape क्या देनी है। तो I think it's one. It's just one dimensional array and let me check कि उन्होंने, हाँ, dense units are again one. और इसके ऊपर आपका linear activation लगता है। Default activation unit has not been specified here. I think it will be 10H. बहरहाल epoch पे हमने ट्रेनिंग करवाई है 100 epochs पे with a batch size of 32. So the loss you can see is very, very less. बहुत कम loss है, but this is the data that has been actually min max scaled. इन्होंने difference नहीं किया उसको, ठीक है? So the loss is pretty. This, I don't think this is the root mean squared loss. The mean squared error. रूट मीन स्क्वायर्ड एरर इज मोर स्ट्रिक्ट, लेकिन वो भी कम ही होगा, जाहिर सी बात है। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो और कम हो जाएगा। सो दैट्स वेरी गुड। देन वी डू समथिंग फॉर द टेस्टिंग केस। सो ट्रेन का ये था, टेस्ट का बाकी था। टोटल में उसने कंकैट कर दिया, इसकी वैल्यूज कर ली, इनपुट्स को रीशेप किया, ट्रांसफॉर्म किया। तो दिस इज आई थिंक फॉर द टेस्टिंग पार्ट। सो वी हैव तकरीबन 500 रोज फॉर द टेस्टिंग वन, ठीक है? And then obviously we try to make the prediction, model.predict x test, and then we inverse transform again, क्योंकि जो आपने वो किया था, min max scaling की थी, उसका आपने उल्टा जाना है। And then, you know, the real Tesla and the predicted Tesla. So you can see कि initially जो pattern है पकड़ रहा है, but in the last few timestamps it's not catching the pattern because of the fact कि real Tesla is doing something really strange. इन द लास्ट, और ये एक्चुअल डेटा जो मैंने अभी डाउनलोड किया है 2020, इनफैक्ट 2020 का ही था जो लेटेस्ट था ना, आई थिंक 2020 का ही है। सो इट्स डूइंग समथिंग रियली स्ट्रेंज एंड दैट इज व्हाई द मॉडल इज नॉट एबल टू गेट दैट। सो ये प्रॉब्ली एक रैंडम ऑकरेंस है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है? सो ये दोनों एक चीज हम इस तरह कर सकते हैं कि जैसे ये ऑब्वियसली न्यूज़ के अंदर कुछ ना कुछ इसके मुतालिक आ रहा होगा, जी, तो उस वाली इंफॉर्मेशन को इसमें एम्बेड करें, न्यूज़ जी जी वगैरह जी के अंदर वो करें तो इंप्रूवमेंट हो सकती है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, न्यूज़ इंफॉर्मेशन जरूर डालें, लेकिन इसमें यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू न्यूमेरिकल। So I think if you take some financial indicators like the GDP or the, you know, oil price rate, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में आ रहा है, या इन्फ्लेशन रेट, ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट और लोकल इन्फ्लेशन रेट, वो चीजें जो है ना वो ज्यादा इस पे काम आएंगी। न्यूज इंफॉर्मेशन you will have to discretize that to some numerical information. So it is better to have a multivariate time series in this case. Although मुझे अगले देखें मल्टीवेरिएट टाइम सीरीज में तो फिर मल्टीपल लेवल पे प्रेडिक्शंस होंगी ना। ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। असल में आपका अगला जो लेक्चर है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मुझे आपको मल्टी स्टेप तो नहीं, लेकिन मल्टीवेरिएट टाइम सीरीज का हैंड्स ऑन करवाना है, और बाकी बाई डायरेक्शनल का भी हैंड्स ऑन है, और जो अटेंशन बेस्ड नेटवर्क्स हैं उनका भी हैंड्स ऑन है। तो अगला जो लेक्चर है वो हमारा बहुत जरूरी है, तो आई थिंक उसको हम जस्ट वेट अप टू दैट। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी फोरकास्ट को इम्प्रूव करने के लिए यू कैन इनपुट दी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, राइट?
जी सर बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो जो डेटा बनेगा ना, देखें, देन प्रोबेबली ये वाला मॉडल शायद इतना काम ना रहे। उन दैट केस वो फिर रिग्रेशन प्रॉब्लम पे चला जाएगा। दैट विल बी कन्वर्टेड टू अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि देखें, हर टाइम सीरीज सेपरेटली ली जाएगी, अनलेस के आपने जो एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स डाले हैं, वो एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स को आप किसी तरह कोई एक ही वेरिएबल बना के उसका इन्फ्लुएंस डालना चाहें, या फिर इन सबको कंबाइन करके इन्फ्लुएंस बनाना चाहें, वो है। लेकिन आई डू नॉट थिंक सो कि वो इसको इस तरह लेगा, क्योंकि एलएसटीएम का आर्किटेक्चर जो है, हाँ, ये थोड़ा सा, नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह है, तो इनपुट के देखें, आउटपुट तो स्टॉक वैल्यू है, राइट? इनपुट के ऊपर जो मेरे पास वेक्टर नोटेशन आ रही है, आई कैन इंक्लूड मल्टीपल थिंग्स इन दैट। समझ में आ रही बात की? यानी जो इनपुट मैं यहां प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके अंदर आई कैन हैव मल्टीपल थिंग्स एट द टुगेदर। जी सर बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये कर सकते हैं, ये हो जाएगा बिल्कुल। ये मैंने एक एप्लीकेशन देखी थी उसकी, हेल्थ केयर में। I mean, they had like 50 indicators for the patient current health, and they were predicting the mortality or something like that, something similar to that. Maybe कोई वो चीज कैलकुलेट करे थे, तो they were inputting all of this information to the LSTM cell. ये हो जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन मैं फिर आपको नेक्स्ट फ्राइडे को बताऊंगा इंशाल्लाह। सही है? जी सर। हाँ, तो बस आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर, और